has only one option: a rapid transition to a new era of green, clean, and renewable energy. The COVID pandemic has further put the climate issue in the crisis bucket. कुछ इन्हीं शब्दों के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी युग की बड़े पैमाने पर शुरुआत की। वायरलेस ब्रॉडबैंड जैसी सफलता हासिल करने के विजन के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज नए सफर पर निकल चुका है। With these new initiatives, Reliance will put Gujarat and India on the world's solar and hydrogen map. 5G नीलामी से लेकर IPL ब्रॉडकास्ट की बोली, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी उपलब्धियों का साल रहा है। पिछले साल रिलायंस के शेयर ने 30% का जोरदार उछाल दिखाया। 10,500 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ रिलायंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई। बतौर सिंगल कंपनी जीडीपी ग्रोथ, एक्सपोर्ट और टैक्स में सबसे ज्यादा योगदान रिलायंस का रहा है। साथ ही क्लीन एनर्जी का पहिया भी तेजी से घूमने लगा है। We are launching our new energy business with the aim of bridging the green energy divide in India and globally. And we will do it like we have always done, by getting our first principles right. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम के विस्तार का मिशन अपने हाथों में ले लिया है। इस मेगा प्लान में सोलर पावर जनरेशन और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का प्लान भी शामिल है। There is a generational shift towards clean energy, and fortunately India is being viewed very favorably on renewables. Based on investment opportunities in renewables, India ranks amongst the top 3 countries after US and China. So really what excites investors is the pace of change we have here in India, the plug and play model for solar parks and the other fiscal and other incentives for renewable. दुनिया में ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसमें नई तकनीक की खोज पर भी काफी काम हो रहा है। इस मिशन पर मशवरा देने के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी काउंसिल की स्थापना हुई है। इसमें दुनिया के जाने माने लीडर्स शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने न्यू एनर्जी काउंसिल का गठन किया है और ये काउंसिल में दिग्गज एनर्जी एक्सपर्ट शामिल हैं। अगर हम इस न्यू एनर्जी काउंसिल की बात करें तो जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसको लेकर आगे की स्ट्रेटेजी ये काउंसिल बनाएगा और जो नेसेसरी ग्रोथ का रोड मैप है वो भी इंप्लीमेंट करेगा। रिलायंस ने नई खोज, पेटेंट और ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन में आगे रहने वाली दुनिया की बेहतरीन कंपनियों के साथ करार किया है। बैटरी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए रिलायंस ने अमेरिका की आम्ब्रीन, यूके में फारादियोम और नेदरलैंड की लिथियम वर्क्स के साथ हाथ मिलाया है। वहीं सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के प्रोडक्शन के लिए रिलायंस ने जर्मनी की नेक्स्ट वाफ में निवेश किया। साथ ही भारत में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेनमार्क की 30 डेल के साथ साझेदारी की है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर आरईसी सोलर में भी रिलायंस ने हिस्सा लिया। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल में भी कंपनी ने 40% हिस्सा खरीदा है। बड़े सोलर प्रोजेक्ट में दुनिया की बड़ी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये कंपनियां। We are exploring new and advanced electrochemical technologies that can be used for such large-scale grid batteries to store the energy that we will create. We will collaborate with global leaders in battery technology to achieve the highest reliability for round-the-clock power availability through a combination of generation, storage and grid connectivity. जामनगर में 5,000 एकड़ में फैले धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में 4 गीगा फैक्ट्री के निर्माण का काम चल रहा है। इस विशाल फैसिलिटी में सोलर पैनल निर्माण और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की क्षमता के साथ इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल प्रोडक्शन की क्षमता भी होगी। कंपनी की सालाना रिपोर्ट में मुकेश अंबानी ने कहा था कि अगले 12 महीनों में
ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन में निवेश शुरू किया जाएगा और कुछ साल में ये और बढ़ेगा। ग्रोथ का ये नया इंजन 5 से 7 वर्षों में हमारे पास मौजूद ग्रोथ के सभी इंजनों के आगे निकलने की क्षमता रखता है। I think if you were to take a look at it from a level above and look at the sort of various verticals that Reliance is making a move into, or the various transitions that Reliance is making a move into, there's 3. There's the energy transition, and that really has got to do with solar in Reliance's case. There's the mobility transition, and there's the hydrogen transition. And it's really interesting that they seem to be taking 3 different approaches when it comes to each of these. The best of the world is coming to India to make this whole hydrogen ecosystem happen. And it's the best of India, which is at the front and center of making it happen. Whether you look at the top conglomerates, you look at an L&T, you look at the top public sector undertakings like NTPC, Indian Oil, ONGC, etc. All the top big companies in India are seeing the huge potential out of this. Market size and opportunity is pretty large over there. If you look at renewable energy itself, we are looking at somewhere about 20 gigawatts of incremental capacity addition over the next 5 years. That is every year I'm talking about. And by the time we reach 2035 or so, we will be looking at somewhere about 40 gigawatts of incremental capacity addition. And Reliance will eventually get to about 10 gigawatts of module capacity, so about 25% share. So clearly, the market opportunity is very large. The quantum of investment is almost 6-folds or 7-folds higher than what they've already, mentioned in the last AGM. And to that extent, the capital allocation which has been envisaged, which is approximately 50% of their current balance sheet size. The FY21 balance sheet is almost 11 lakh crores. And to that extent, incrementally, 50% of the capital will be deployed in the new energy business. Despite the challenges we have faced, when we look back at the year, we feel humbled and inspired that each and every person in our Reliance family went out of their way to help one another, much beyond the call of duty. इस साल 28 जून को रिलायंस जियो की जिम्मेदारी 30 वर्षीय आकाश अंबानी को देते हुए मुकेश अंबानी ने अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की कवायद शुरू कर दी है। 5G की सफल नीलामी के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती 5G लॉन्च और उसके सफल रोल आउट की है। We are confident of being the first to launch a full-fledged 5G service. And because of our converged, future-proof architecture, Jio's network is uniquely positioned to quickly and seamlessly upgrade from 4G to 5G. स्पेक्ट्रम लेने के लिए रिलायंस ने 88,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। तय शर्तों के मुताबिक 7.2% की सालाना ब्याज दर पर 20 किश्तों में स्पेक्ट्रम की पेमेंट करनी होगी। इसका मतलब ये है कि हर साल रिलायंस जियो को करीब 8,000 करोड़ खर्च करने होंगे। 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 3,300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम लेकर जियो ने सभी 22 सर्कल में अपनी लीडरशिप पोजीशन मजबूत की है। 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के चलते जियो एकमात्र ऐसा ऑपरेटर होगा जो भारत में सही मायने में बेहतरीन 5G सर्विस देगा। 700 megahertz was a big positive surprise with Jio, and the minister said that Jio has taken it for all India. I think 5G is going to be a very serious game in India with the kind of investments which are going in. The distinguishing factor between the three is that Reliance has bid for pan-India spectrum, 2 blocks in the 700 megahertz. सभी भारतीयों तक सस्ता स्मार्टफोन पहुंचाने के मकसद से रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर जियो फोन नेक्स्ट भी लॉन्च किया। At a time when so many aspects of our lives and work are moving online, it's even more important to make technology accessible and helpful for everyone. This goal is at the heart of our partnership with Reliance Jio. I was proud to help launch this partnership last year. It was the first and biggest equity investment from the 75,000 crore rupees
Google for India Digitization Fund. महामारी के दौर में छोटे कारोबारियों के बिजनेस में मदद के लिए जियो ने फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ भी साझेदारी बढ़ाई है। We continue to be so excited with our partnership with Meta, and in collaboration with the WhatsApp team, we intend to build out native features that will help the entire value chain of users, shoppers who could seamlessly shop on WhatsApp, but also retailers increase their stock assortments, improve their margins, and get them closer to perhaps a larger customer base that they've never touched before. दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स और भारत के जाने माने फैशन डिजाइनर्स के साथ हाथ मिलाकर रिलायंस ब्रांड ने लग्जरी और प्रीमियम लाइफस्टाइल सेगमेंट में बड़ी छलांग लगाई। अरमानी एक्सचेंज, बोटेगा विनीता, बर्बरी, वर्साचे, मेसों वैलेंटिनो जैसे ग्लोबल ब्रांड्स भारत में अपने फ्लैगशिप स्टोर खोलने के लिए रिलायंस ब्रांड के साथ हाथ मिला रहे हैं। Our apparel business sold nearly 5 lakh units per day and over 18 crore units during the year. This is equivalent to dressing the entire population of UK, Germany and Spain once. अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए रिलायंस ने भारत के टॉप फैशन ब्रांड्स में अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ऋतु कुमार, मनीष मल्होत्रा, अनामिका खन्ना, राहुल मिश्रा, इब्राहिम ठाकुर और अबू जानी संदीप खोसला जैसे दिग्गज रिलायंस ब्रांड की अब ताकत बढ़ा रहे हैं। Reliance Retail continues to be the undisputed leader in organized retail in the country, with a scale that is more than 6 times the next competitors. कंज्यूमर बिजनेस का रिलायंस रिटेल अहम हिस्सा है। कंपनी के पास अब देश भर में 15,000 से ज्यादा स्टोर हैं। इस साल रिलायंस रिटेल ने न सिर्फ 2,500 नए स्टोर खोले, बल्कि 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फुट वेयरहाउसिंग स्पेस भी जोड़ा। जब कोरोना महामारी से रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा था, तब भी रिलायंस रिटेल ने 1.5 लाख नौकरियां दी। रिलायंस ने वित्त वर्ष 2022 में विस्तार, अधिग्रहण और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से कंपनी की क्षमता बढ़ाई है। कंपनी ने B2B मार्केटप्लेस जस्ट डायल का अधिग्रहण भी किया। इससे न्यू कॉमर्स को लेकर कंपनी का कमिटमेंट जाहिर होता है। मर्चेंट पार्टनरशिप और डिजिटल कॉमर्स का रेवेन्यू में योगदान 10% से अब बढ़कर 17% हो गया है। रिलायंस के पास दुनिया का सबसे आधुनिक और इंटीग्रेटेड ऑयल एंड केमिकल बिजनेस है। ये न सिर्फ देश को ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराता है, बल्कि इकोनॉमी को चलाने में बड़ा योगदान भी देता है। ऊंचे वॉल्यूम, प्राइस रियलाइजेशन और डिमांड रिकवरी से O2C बिजनेस का रेवेन्यू 56% बढ़ा है। वर्ल्ड क्लास केमिकल प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक करार किया। जियो बीपी ने मिलकर दिल्ली एनसीआर में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब लॉन्च किया। साथ ही कंपनी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन नेटवर्क पर भी काम कर रही है। 2035 तक जीरो कार्बन स्टेटस हासिल करने के लिए रिलायंस ने कई बड़े कदम उठाए हैं। We will use solar energy on an economically attractive basis to decarbonize our existing O2C business and accelerate our journey to become net carbon zero. We will transform our legacy business into a sustainable, circular and net zero carbon materials business. One that will provide growing returns for over several decades. And we will do this by repurposing our existing assets to extend their economic life and earning capacity. In doing so, we will have no legacy asset write-down in the coming years. मीडिया कारोबार में भी रिलायंस तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत में सबसे बड़ी टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनी बनने के लिए रिलायंस और वायोकॉम 18 ने बोधी ट्री सिस्टम्स के साथ स्ट्रेटेजिक करार किया है। बोधी ट्री सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म का संचालन जेम्स मर्डॉक की लूपा सिस्टम्स और उदय शंकर करते हैं। डील के मुताबिक वायोकॉम 18 में बोधी ट्री सिस्टम्स 13,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस भी कंपनी में अतिरिक्त 1,645 करोड़ रुपए डालेगी।
भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी आईपीएल के एक्सक्लूसिव डिजिटल राइट्स हासिल कर वायोकॉम 18 ने बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। आईपीएल राइट्स के लिए अगले 5 साल में वायोकॉम 18 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी आईपीएल के ब्रॉडकास्ट के अधिकार 600 करोड़ रुपए में हासिल किए हैं। Absolutely brilliant. That's a stunner. More history for Novak Djokovic. सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अब कई दूसरे स्पोर्ट्स भी वायोकॉम 18 की छत्र छाया में फल फूल रहे हैं। इस साल कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का भारत में ब्रॉडकास्ट के राइट्स भी इसके पास है। स्पेन, इटली और फ्रांस में होने वाले फुटबॉल लीग के राइट्स भी कंपनी की झोली में हैं। साथ ही एनबीए, बैडमिंटन और टॉप टेनिस टूर्नामेंट के टेलीकास्ट राइट्स वायोकॉम 18 के हाथ में हैं। जाहिर है वायोकॉम 18 देश में खेलों को बढ़ावा देने वाला एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उभर रहा है। We have to enlarge the process many times over. Not 5, but 500 million people should be helped to create a wealth and gain prosperity. But we cannot rest. We did not and we will never rest on our laurels. Beyond financials, you taught us the meaning of corporate social responsibility long before CSR became a buzzword. Reliance Foundation, over the last 11 years, has always stood shoulder to shoulder with the people of India in every challenge, big or small, through good and bad times. देश के 50,000 से ज्यादा शहरी और ग्रामीण इलाकों में रिलायंस फाउंडेशन की पहुंच है। इसने 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। कोरोना महामारी के दौरान फाउंडेशन में 5 बड़े मिशन चलाए। ऑक्सीजन सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना, कर्मचारियों का ख्याल रखना और वैक्सीनेशन जैसे काम इसने कोविड के दौरान किए। As a community, we owe each and every frontline warrior a huge debt. With folded hands, I salute their spirit of care and sacrifice. A big thank you on behalf of all of us. रिलायंस ने करीब 24 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया। इसमें कर्मचारी और उनके परिवार का मुफ्त टीकाकरण भी शामिल था। आपदा के समय उठाए गए कदमों से 11 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई गई। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है। साथ ही इसके शिक्षा अभियानों से 4 लाख से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों का फायदा हुआ है। नवी मुंबई में अब जियो इंस्टीट्यूट भी शुरू हो गया है। We have also worked very hard through these challenging times to bring our dream project, the Geo Institute, to life. Geo Institute is envisioned to be an exemplary academic institution with a world-class platform for research, innovation, and lifelong learning. रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ये शानदार उपलब्धियों का साल रहा है। क्लीन और ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उठाए कदम से कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ के लिए मजबूत आधार मिलेगा। जियो 5G युग की तैयारियों में जुटा है, जिससे 100 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। कंपनी करोड़ों शेयरधारकों के लिए लगातार वैल्यू क्रिएट कर रही है। 40वें एजीएम तक के जो बीच का सफर था वो देखा। एक बारी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस पे भी नजर डालिए, चार्ट पे भी नजर डालिए। एकाएक बाइंग और दिन के ऊपरी स्तरों पर रिलायंस अब कामकाज कर रहा है। 2635 का मौजूदा स्तर, 18 रुपए की तेजी, डे हाई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज। कुछ ही देर में रिलायंस की 45वीं एजीएम भी शुरू होने वाली है, तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार एक मेगा कवरेज रिलायंस की 45th एजीएम की, छोटे से ब्रेक के बाद।
Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Ad Shop E-Retail Limited, the manufacturers and retailers of organic fertilizer, Ayurvedic medicines and herbal cosmetics, with a pan-India network of 1,200 plus franchises and 1 lakh plus distributors, presents its rights issue on BSE platform with a base price of 10 rupees and a premium of 44 rupees. Total issue price 54 rupees. Rights issue is open from 17th to 30th August. लो आ गई। मम्मा और कोई ऑप्शन है क्या? मम्मा लाइफ में और कहीं ऑप्शंस मिले ना मिले, मोतीलाल ओसवाल आपको देता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस। इंट्रोड्यूसिंग मोतीलाल ओसवाल ऑप्शन स्टोर विद अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक्सप्लोर करो ऑप्शन स्टोर ऑन एमओ इन्वेस्टर एंड एमओ ट्रेडर ऐप। डाउनलोड नाउ। Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Presenting Vito Wires and Cables. Vito since 1967. डार्लिंग मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। घर बैठे बैठे 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी बाहर जाओ। ऊपर से कैशबैक भी मिलेगा, मेंबरशिप डिस्काउंट भी मिलेगा, फिर भी बाहर जाओ। सॉरी कहीं नहीं जाऊंगा। फार्म इजी ऐप पे जा सकते हो। फार्म इजी पे मिलेगी हर ऑर्डर पे बड़ी सेविंग्स। लीडिंग लाइट मतलब? लीडिंग लाइट यानी जिसके परफॉर्मेंस में दम हो, जो हर रोल में फिट हो और हर घर में हिट हो, जैसे सिस्का एलईडी। सिस्का एलईडी, लाइट ईयर्स अहेड। Ad Shop E-Retail Limited, the manufacturers and retailers of organic fertilizer, Ayurvedic medicines and herbal cosmetics, with a pan-India network of 1,200 plus franchises and 1 lakh plus distributors, presents its rights issue on BSE platform with a base price of 10 rupees and a premium of 44 rupees. Total issue price 54 rupees. Rights issue is open from 17th to 30th August. To be or not to be? Cut. To be. Cut. To be. Cut. क्या हो रहा है यार, ये एक्टर से कट पुतला बना दिया है। अबे कट करना ही है तो अपनी लाइफ से ये पुरानी लाइट्स कट करो। मतलब इसका एलईडी लगाइए और अपने पावर बिल्स को और एनवायरमेंटल डैमेज को भी कहिए कट। दैट इज द क्वेश्चन। कट। सिस्का एलईडी, लाइट ईयर्स अहेड। सिस्का। बॉस 12 बजे से पहले छोड़ता नहीं है। मकान मालिक 12 बजे के बाद दरवाजा खोलता नहीं है। अब क्या करें, घर पर आया है, पति तो अपना है। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। दीवारों के रंग या फैंसी बाथरूम फिटिंग्स पे ना जाइए। अंदर की मजबूती जो सिर्फ टीएमटी से मिलती है, उसको परखिए। कहीं कोई सस्ता लो क्वालिटी टीएमटी तो नहीं। पूछिए अपने बिल्डर से, आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित, कैप्टन टीएमटी, घर की ताकत। आज दोपहर 2 बजे होने वाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम। 5G सेवाएं, रिटेल और ग्रीन एनर्जी पर हो सकते हैं बड़े ऐलान। CNBC आवाज पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। फेड चेयरमैन के बयान के बाद बाजार में कोहराम। निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा फिसला। निफ्टी बैंक में 700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। हालांकि निचले स्तरों पर दिखी मामूली रिकवरी। अमेरिका में तेजी से ब्याज दर बढ़ने की आशंकाओं से रुपए में भी जोरदार गिरावट। 80-12 के रिकॉर्ड नीचे को छुआ। 10 साल की बॉन्ड यील्ड में भी दिखी बढ़त। और अमेरिका में मंदी की आहट से टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली। भारतीय आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा टूटा। आज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक जैसे दिग्गजों में
4% का नुकसान। मिड कैप आईटी में गिरावट ज्यादा, 7% से ज्यादा टूटा और वायदे का टॉप लूजर बना आज इन्फो एज। कमजोर बाजार में एफएमसीजी सेक्टर में दिखाया दम, 3% ज्यादा चढ़े कोलगेट, ब्रिटानिया, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर। साथ ही चुनिंदा ऑटो शुरू में रफ्तार, 6% की तेजी के साथ एफएनओ का टॉप गिनर बना एस्कॉट्स कुबोटा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कुछ ही देर में शुरू होने वाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम। उससे पहले भारतीय बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर पेश करेंगे। बड़े ऐलान ऑफ कोर्स रिलायंस समूह की ओर से आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मार्केट की चाल इस बीच आज थोड़ी सी नरम है। करीब 17,354 के आसपास आपको निफ्टी दिखाई देगा। 200 अंकों के नुकसान पर इस समय हम खड़े हैं। हालांकि सुबह में धक्का ज्यादा था, 17,100 के आसपास हम दिखाई दे रहे थे। 100-150 अंकों का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब चाल देखिएगा, वहां से थोड़ी सी सुधरी जरूर है। निफ्टी बैंक में प्रेशर ज्यादा, 680 अंकों तक का नुकसान इस समय स्क्रीन पर। डे लो से रिकवरी सेंसेक्स की भी हुई है। अब आपको स्क्रीन पर सेंसेक्स दिखाई देगा 700 पॉइंट नीचे, लेकिन रिकवरी में करीब 777 पॉइंट आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिलाकर सुबह में सेंसेक्स 1400 पॉइंट तक के नुकसान पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था। तो प्रेशर अच्छा खासा बना। सपोर्ट कहां से आया है उसकी बात करते हैं पहले। तो इस समय मार्केट को संभालने के लिए जो कुछ स्टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं, निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ग्रासिम, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स, सन फार्मा जैसे काउंटर्स, HUL, टाइटन जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। और सबसे बड़ा योगदान तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है ही। एजीएम से पहले स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। ITC, मारुति, ब्रिटानिया जैसे ट्रेड्स भी हैं जहां पर तेजी बनी है। लेकिन अगर आज मार पड़ी है तो दो खास सेक्टर्स पर पड़ती हुई दिखाई दी। एक है टेक्नोलॉजी काउंटर्स, क्योंकि नैस्डैक में जिस तरह का सेल ऑफ देखने को मिला था, और अगर अमेरिका में मंदी का खतरा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आईटी कंपनियों का जहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोजर है वो पिटे हैं। 1000 पॉइंट नीचे इस समय आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का आईटी इंडेक्स 3.5% के नुकसान पर। साथ ही साथ आप गौर करिएगा, निफ्टी बैंक की जो हालत पतली हुई है, HDFC, SBI, ICICI बैंकों में कमजोरी के चलते हुई है। वीरू, आज क्लोजिंग के लिए बताइए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? आफ्टरनून अभी जो आपकी स्क्रीन पे हर्षता, वही बिल्कुल गुड आफ्टरनून हर्षता, वही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए। देखिए हर्षता, 360 और 350 हमारा 23 अगस्त की कैंडल का निफ्टी का लो था। हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है करीब 17,416 पे। तो आप यकीन मानिए इस वक्त रिलायंस स्टे हाई पे। देखिए इस तरह डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपके स्क्रीन पर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन इवेंट के साथ अगर आप देखें इंडेक्स और इंडेक्स के साथ टॉप कंट्रीब्यूटर का जो प्लेसमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। इस 2647 का मतलब क्या है? याद रखिएगा, 2647 का मतलब यह है रिलायंस अपनी पूरी की पूरी इस दौर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है 18 अगस्त के बाद अब तक उसको स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। तो हर्षता, ये जो आपका लेवल है ना 17,360, ये 23 अगस्त की कैंडल का लो है। अगर ये टिक गया और इसके ऊपर कुछ देर और टिक गया तो आई थिंक ये कुछ भी कर सकता है और शायद उस रिकवरी को एक मीनिंगफुल एज मिल जाए जो सुबह से हमने देखी है। तो हम स्ट्रांग स्टेबल हो सकते हैं अगर Ladies and gentlemen, good afternoon. Dear shareholders, namaskar. It is 2 p.m. and time to start the meeting. I welcome all of you to the 45th annual general meeting of the company. This meeting is held through video conferencing because of the prevailing situation. This is in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting and vote. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. The requisite quorum is present and therefore I call the meeting to order. Register of directors and key managerial personnel and their shareholding and register of contracts or arrangements in which directors are interested are available.
This will remain accessible to the members for inspection electronically if they so desire. I wish to introduce, for the benefit of our new members, my colleagues on the board of our company. Shri Adil Zanul Bhai, Shri R.S. Gujral, Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Srimati Neeta M. Ambani, Shri Nikhil R. Meswani, Shri Hital R. Meswani, Shri P.M.S. Prasad, and Shri P.K. Kapil. All directors of the company are present at this meeting. Shri Alok Agarwal, Shri V. Shrikant, Chief Financial Officers, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, and Shri K. Sethuraman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditor of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 6, 2022, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31st, 2022, has already been circulated to the members of the company electronically. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2022 do not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, the reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now, I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste. A very warm good afternoon to each and every one of you. It gives me great pleasure to welcome you to the 45th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. Like the previous 2 years, this AGM is also hosted on a digital platform. The digital platform enables more shareholders from across the world to participate in the AGM. I miss the warmth and the bonhomie of our personal interactions. I sincerely hope that next year we will be able to switch to a hybrid mode which will combine the best of both physical and digital modes. Friends, 2 weeks ago, we celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th anniversary of India's independence. Our visionary Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, in his most inspiring speech on August 15th, has given us a clear roadmap to make the next 25 years the most transformational in the history of our motherland. The Panch Pran, or the 5 imperatives he has articulated, will surely make India a developed nation by 2047. He has aptly described that the next 25 years is India's Amrit Kal, the era of elixir. Within the next one generation, India is set to achieve more than all the post-independent generations have collectively achieved so far. And Reliance is set to make a far greater contribution to India's prosperity and progress than we have done so far. Friends, the world has almost fully overcome the COVID pandemic. This is heartening. However, there is uncertainty again due to heightened geopolitical tensions and global risks. There is severe economic stress in many parts of the world. Rising fuel, food, and fertilizer prices are impacting everyone in the world. High inflation and supply disruptions are triggering recessions. Amidst this global unpredictability, India stands tall as a beacon of growth and stability. The government's skillful management of the pandemic and the pragmatic approach in dealing with the ensuing economic challenges have helped India emerge stronger than before, wiser than before, and more resilient than before. I would like to congratulate our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, for his far-sighted leadership, and our Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji,
for her exemplary stewardship in navigating the Indian economy through a period of unprecedented challenges. The most profound lesson that the world has learned from the pandemic is greater the adversity, greater still is humanity's inner strength to conquer it, provided we care for each other. Friends, this prompts me to reiterate the core philosophy of Reliance, the philosophy of we care. We care for our employees and their families. We care for all our stakeholders, customers, shareholders, and partners. We care for India and all 1.4 billion Indians. We care for the planet and its people. It is the philosophy of doing good to do well. It is the philosophy to create greater value for others first. The ever-expanding circle of care enhances respect for Reliance globally and ensures its sustainable growth year after year, decade after decade, and generation after generation. Dear friends, let me now speak about the business and financial performance of your company in the year 2022. Reliance has continued to make all-around progress across its businesses. Our company became India's first corporate to cross $100 billion in annual revenues. Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. Reliance's annual consolidated EBITDA crossed the crucial milestone of 1.25 lakh crores. And in true We Care spirit, Reliance Foundation continued to benefit millions of people across the country. Reliance not only set higher benchmarks of serving the community, but also created business value and societal value on an unparalleled scale. Reliance's exports grew a massive 75% to cross 250,000 crores. We accounted for nearly 8.4% of India's merchandise exports in the year, up from 6.8% last year. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance's contribution to the national exchequer by way of various direct and indirect taxes increased 38.8% to 188,012 crores. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. Friends, let me start with our digital services business, Jio. Over the past year, Jio has further consolidated its position as India's #1 digital services provider. Today, we have 421 million mobile broadband subscribers on our 4G network, and they consume, on average, nearly 20 gigabits of broadband data every month, which is nearly double their consumption from the year before. Inspired by our dynamic Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji's Digital India initiative, our country has seen the emergence and scale-up of multiple world-class national platforms, which have brought enormous benefits and ease of living to ordinary citizens, like Aadhaar, a common national identity for 1.3 billion Indians, like Jan Dhan, a self-service bank account that has brought financial inclusion to over 460 million unbanked Indians, especially women, like RuPay, an indigenous payment card network with over 630 million cardholders, and like UPI, one of the most accessible digital payment system with a monthly volume of over 6 billion transactions, like Ayushman Bharat, providing health coverage to over 500 million Indians. Another example is our Prime Minister's path-breaking Startup India initiative, under which India has launched over 73,000 new startups in the last 6 years. They have collectively attracted nearly $63 billion of investment and contributed to the creation of lakhs of new employment opportunities.
And we have the example of how India has used digital connectivity and digital platforms to stay resilient even during the COVID-19 pandemic. With both humility and pride, I would like to state that all these phenomenal accomplishments became possible because Jio built a world-class 4G digital infrastructure at the right time with sufficient capacity and offered it most affordably to every Indian to take India to global leadership. Let me now talk about Jio's fixed line network. Jio's high-quality, redundant, and always available fiber optic network is the information backbone that carries data traffic from every corner of India and connects it to the global internet. Today, Jio's pan-India fiber optic network is more than 11 lakh route kilometers in length, enough to go around the planet Earth more than 27 times. Over the past year, we also saw acceleration in the adoption of Jio Fiber, with 2 out of every 3 new customers choosing Jio Fiber. Jio Fiber is now the #1 FTTX service provider in India with over 7 million connected premises, a feat achieved in less than 2 years despite COVID lockdowns. But despite strong growth, India still lags behind the rest of the world significantly in fixed broadband services. With about 20 million connections, India is ranked a lowly 138th in the world in fixed broadband adoption. Unlike in leading nations, the vast majority of our homes, offices, and businesses have been deprived of the power of fixed broadband and ubiquitous indoor Wi-Fi, and consequently, the power of modern digital tools. This has to change, and change fast. Jio will change this. We will enable India to be among the top 10 globally in fixed broadband adoption. Friends, today I want to announce the next leap forward that Jio is creating in digital connectivity, especially in fixed broadband, and that is Jio 5G services. Using 5G technology, we can now deliver breakthrough increases in broadband speed, network capacity, and number of connected users, while dramatically reducing latency. With Jio 5G, we can achieve 3 simultaneous objectives. 1, we can build on the success of Jio 4G by introducing an even more advanced version of our mobile broadband service. 2, we can accelerate the rollout of high-quality, highly affordable fixed broadband services to hundreds of millions of locations in a very short period of time. And 3, we can use this vastly expanded broadband availability to further stimulate the adoption of connected, intelligent solutions across all walks of life. Specifically, we can connect over 100 million homes with unparalleled digital experiences and smart home solutions. We can leapfrog tens of millions of small merchants and small businesses by empowering them with cutting-edge plug-and-play solutions delivered from the cloud. We can provide lakhs of medium businesses with the same digital capabilities that were historically available only to larger companies. We can accelerate the digital transformation of tens of thousands of our large enterprises and make them globally competitive. We can launch billions of smart sensors with connected intelligence that can power the Internet of Things and the 4th Industrial Revolution. With Jio 5G, we can connect everyone, every place, and everything with the highest quality and the most affordable services. In addition to meeting India's needs, we are confident of offering digital solutions to world markets. At Jio, we are energized by this vision. We are committed to make India the largest data-powered economy in the world, even ahead of China and the United States. Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. Most operators are deploying a version of 5G
called non-standalone 5G, which is essentially a 5G radio signal that is delivered over their existing 4G infrastructure. This non-standalone approach is a hasty way to nominally claim a 5G launch, but this approach cannot deliver the breakthrough improvements in performance and capability that are truly possible with 5G. In sharp contrast, Jio will deploy the latest version of 5G called standalone 5G, which has absolutely zero dependency on our 4G network. With standalone 5G, Jio can deliver new and powerful services like low latency, massive machine-to-machine communication, 5G voice, edge computing, and network slicing. Jio 5G will be true 5G in every sense, and I believe that India deserves nothing less than true 5G. And through the recent auction conducted by the Department of Telecommunications, we have also acquired the largest and the most appropriate mix of wireless spectrum for 5G. And this gives Jio 5G a distinct competitive advantage. In addition to the 3,500 megahertz mid-band spectrum that is globally earmarked for 5G and the 26 gigahertz millimeter wave band for ultra-high capacity, only Jio has the 700 megahertz low-band spectrum that is so very essential for deep indoor coverage. And we are able to seamlessly combine these frequencies into a single powerful data highway using an advanced technology called carrier aggregation. This threefold advantage of standalone 5G architecture, largest and best mix of spectrum, and carrier aggregation means that Jio 5G will be able to offer an unparalleled combination of coverage, capacity, quality, and affordability. We are working very closely with all leading global smartphone OEMs, and we have their commitment that they will support Jio's true 5G in India. I firmly believe that digital freedom is the birthright of every Indian. Therefore, 5G cannot remain an exclusive service available only to the privileged few or only to those in our largest cities. To build our pan-India true 5G network, we have committed a total investment of 2 lakh crore rupees. Jio has prepared an ambitious and the fastest ever 5G rollout plan for a country of our size. Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. We will use our combined wireless and wireline assets to blanket the 3.3 million square kilometers of India's landmass with fiber quality broadband, connecting even those parts of the country where thus far satellite technology was considered the only option for connectivity. Friends, we are able to pursue our disruptive ambitions because of the unique technology, research and development capabilities we have developed in Jio. As I mentioned in our earlier meetings, we have indigenously developed an end-to-end 5G stack, which is fully cloud-native, software-defined, digitally managed, with support of even advanced features like quantum security. This is 100% developed by our own over 2,000 young Jio engineers working tirelessly for the past 3 years. We have already deployed this made-in-India 5G stack in our network with sufficient capacity to serve hundreds of millions of users from day one. Furthermore, Jio 5G is uniquely positioned to offer private 5G solutions for Indian enterprises at owners' economics. Friends, let me now invite Akash and Kiran on stage, who will talk about some of the exciting experiences
that will be possible with Jio 5G. Good afternoon, everyone. I am Akash Ambani. And I am Kiran. As we gear up to roll out Jio True 5G across India, let's take a look at a few interesting possibilities. Let's start with mobile broadband. Only Jio True 5G has the threefold advantage of standalone 5G architecture, broader spectrum, and advanced carrier aggregation technologies. Jio True 5G truly delivers breakthrough increases in broadband speed and dramatically lower latency. Let's see this in action with a speed test on Jio True 5G. Wow! We don't get 1 Gbps even on many of the fixed broadband networks in our country. Since 2016, Jio 4G has unleashed a tsunami of digital applications and rich digital content across India. Today, over 80% of the data consumed on Jio 4G is in video format. With Jio True 5G, mobile broadband will shift gears yet again, and we can enjoy even more video and immersive content. That too, consistently in ultra-high definition quality, no matter where you are. This also means that you will get a dramatically superior experience when you use your favorite video streaming and video calling mobile applications. 5G will not only enhance all your current mobile experiences, but will also create new and first-time experiences that will only be possible with 5G. For example, for the first time, the ultra-low latency of Jio True 5G will enable real-time applications like cloud gaming, even while you are on the move. And in the near future, it will also enable immersive experiences like augmented reality with Jio Glass and devices from many other partners. An even more exciting possibility of Jio 5G is ultra-high speed, fixed broadband. And since you get fiber-like speeds over the air without any wires, we are calling it Jio Air Fiber. With Jio Air Fiber, it is now really easy and really quick to connect your home or office to gigabit speed internet. We've developed a Jio Air Fiber home gateway, which is a wireless, simple, single device solution. Get it, plug it in, and turn it on. And that's it. You now have a personal Wi-Fi hotspot in your home which is connected to ultra-high speed internet using True 5G. And on top of that, because it's an end-to-end wireless solution, there are no wires coming into your home or creating a tangle inside. With such a simple process, literally hundreds of millions of homes and offices can be connected to ultra-high speed broadband, that too in a very short period of time. And India can once again be in the top 10 nations, even for fixed broadband. And the two-way interactivity enabled by Jio Air Fiber can create completely new and highly engaging experiences for the entire family, like interactive live content, cloud gaming, immersive shopping, and much more, with focus on continuously enhancing customer experience and privacy. For example, Reliance and Jio are bringing some of the best sporting events like IPL to viewers in India and abroad through our digital platforms. Let's take a look at how we might watch an interactive live IPL match in the very near future with Jio Air Fiber on a large screen. Instead of a traditional broadcast experience, the big difference you can see is that because of gigabit speeds of Jio Air Fiber, we can now deliver not just one video stream, but multiple video streams showing multiple camera angles at the same time live. That too in ultra-high definition. And we can dynamically choose which camera angle we want to focus on while having a preview of multiple other live video streams simultaneously. This makes every sports game truly immersive, even better than a real match experience, and personalized to suit the preferences of each and every viewer. And that's not all. You can even have a watch party with your friends through live video calls no matter where they are in India. Almost like you're watching a match sitting together in the stadium. With Jio Air Fiber's ultra-low latency, things like multiplayer cloud gaming work even better on large screens within your home. This is exciting. Another possibility with Jio 5G is how it can save money for customers in unexpected ways. For example, let's take personal computers.
Today, most homes have to buy a PC or a laptop and spend even more money to upgrade it every few years. Now, using Jio Air Fiber, customers can do away with all such expenses and opt to use a virtual PC that is hosted in the cloud. This is a concept that we call Jio Cloud PC. No large upfront investments, no upgrades, and you only pay to the extent you use the cloud PC, resulting in a super affordable way to bring the power of a PC, even multiple PCs, to every Indian home and business. This will be a game changer for every student, every gig worker, and every small business in our country, be it a pharmacy or a doctor's clinic, a grocer or a hotel, a consultant or a chartered accountant. Everyone can get an affordable computer through Jio Cloud PC and Jio Air Fiber. Even large enterprises can use this solution. Across the Reliance Group itself, we use a lot of computers, and we are now replacing most of these with Jio Cloud PCs. And talking of large enterprises, Jio 5G can also be used to create private 5G networks for large enterprises. When compared to traditional enterprise Wi-Fi networks, 5G networks provide better reliability, better coverage, better data security, higher scalability, and lower cost, especially in demanding situations. Factories of the future and Industry 4.0, where reliability and performance are the topmost concerns, will be powered by private 5G working hand in hand with operational and information technology. For instance, we can use autonomous robotic vehicles to move goods in the demanding environment of a factory floor. And all these vehicles can be monitored and controlled in real time using Jio Private 5G. Another interesting area is energy, which is a major operating cost for most industries. We'll now be able to continuously monitor the energy consumption of each and every equipment in any facility using smart sensors connected via 5G. And we can analyze this rich data using connected intelligence and optimize energy consumption and other operational parameters, thereby increasing efficiency, enhancing productivity, and reducing cost. Because every facility will now be a connected facility, we can monitor all aspects of our operations in real time, even when people are working from home. We're excited by the endless possibilities of Jio 5G and technology to serve humanity and to improve lives of hundreds of millions of our citizens. For example, take agriculture. Jio 5G connected drones can be used for spraying organic fertilizer on crops across the large tracts of farmland in a timely manner, thereby improving yield and reducing cost for our farmers. Or take healthcare. Ambulances equipped with tele-ICUs can reach patients faster, and doctors can use 5G connectivity to remotely monitor a patient's vitals in real time and to deliver critical care even while patients are in transit to an emergency room. This can result in millions of lives saved. Or take education. Providing quality education to the 250 million children of our country is a key development goal for India. Through Jio 5G, we can create the digital infrastructure for delivering high-quality educational content to every student and every classroom across our nation. Padhega India, to badhega India. Through 5G, we will now connect a larger number of end devices across multiple areas, just as we have demonstrated. The current 800 million connected internet devices will double to 1.5 billion connected internet devices within a year itself, with 5G getting rolled out in India. Very soon, we are opening a Jio 5G Experience Center in Mumbai for the public. We will showcase these and many more exciting use cases and possibilities of Jio 5G there for everyone to experience firsthand, even before they are launched in the market. We invite one and all to visit us and experience the magic of Jio True 5G. With that, let us now invite our chairman back on stage. Thanks, Akash and Kiran. Friends, we are also privileged to have some of the world's leading technology players as our strong partners in our Made in India 5G collaboration. We are excited to work with Meta
in realizing our vision of bringing the benefits of immersive technology to everyone. We believe India's vibrant digital ecosystem can play a critical role in shaping the metaverse and bring new possibilities in education, healthcare, and commerce 4.0. We are working with Google to develop ultra-affordable 5G smartphones for India and to leverage the advanced capabilities of Google Cloud to offer Jio's private 5G stack and other 5G-enabled solutions to both domestic and global users at scale. We are partnering with Microsoft to expand the Azure ecosystem in India and to develop a vibrant ecosystem of cloud-enabled business applications and solutions, especially for small and medium businesses. We are working with Intel on technologies used in Jio's cloud-scale data centers and 5G edge locations, and in infrastructure for cutting-edge applications like artificial intelligence. And we have well-established relations with leading global network technology providers like Ericsson, Nokia, Samsung, and Cisco. And today, I want to announce one more exciting partnership with Qualcomm, who is not only a global semiconductor and communications technology major, but also one of our valued investors in Jio Platforms. To share a few words on this partnership, I have with me today my dear friend and the CEO of Qualcomm, Mr. Cristiano Amon. Thank you, Mukesh. I'm privileged to be speaking to all of you. The 5G spectrum auctions are behind us, and Reliance Jio is well positioned to drive digital transformation across all aspects of life in India, utilizing your excellent position in the 700 megahertz, 3500 megahertz, and 26 gigahertz spectrum. Jio plans for reaching 1,000 cities are ambitious, but I'm confident in its proven ability to execute. A great example was the paradigm-shifting 4G rollout in 2016. We worked together to deliver innovation at scale, including advanced LTE data services for devices used by consumers and micro enterprises across India. The results have been incredible. According to the GSMA, there has been a significant improvement in the urban-rural connectivity gap, and data consumption has been increasing steadily, making India one of the highest data-consuming markets globally. With 5G's power to extend far beyond the smartphone, Jio is poised to take the success to the next level. When virtually every device can be reliably connected to the cloud, significant opportunities are unlocked, not only for Jio, but also for India consumers, industry, and enterprises, and even strategic government missions. To fully realize 5G's potential, Jio has spectrum bands that provide a well-balanced mix of capacity and coverage. Millimeter wave will be a critical component of Jio's high-performance 5G network. With its extreme capacity, multi-gigabit throughput, and ultra-low latency, it will enable fiber-like broadband through fixed wireless access, eliminating the need for fiber in inaccessible regions. When I met Honorable Prime Minister Modi last year, he spoke about accelerating advanced communication technologies for the socio-economic advancement of all Indians. Jio and Qualcomm are working to develop the right solutions to help achieve this goal. We're also excited to be working together on cloud-native, scalable, and flexible 5G infrastructure in both millimeter wave and sub-6 gigahertz to develop an ecosystem that can extend beyond India. Additionally, I was happy to learn about Reliance Jio's broader efforts in drones, robotics, automotive, Industry 4.0, and private networks. Reliance is one of the few companies that has the scale to take the solutions across industries and geographies.
Our strategic relationship and complementary strengths, spanning sectors and industry verticals, will enable us to tackle this vast opportunity. As India celebrates 75 years of independence, with Jio, we're committed to developing the digital infrastructure that enables the success of citizens in business and achieves the new India envisioned by the Prime Minister. Paraphrasing Mukesh, 5G rollout is finally a top priority. Congratulations to the entire Reliance team and best wishes for another great year ahead. Thank you, Cristiano. I am confident that the solutions developed by Qualcomm and Jio, once proven in India, can be taken to the rest of the world. Jio 4G, Jio Fiber, and now Jio 5G are uniquely positioned to deliver the best quality, highest value digital connectivity solutions for our country. Likewise, Jio Platforms, our digital services arm, has been quietly building capabilities that span the entire digital solutions ecosystem. And we are deepening our expertise by attracting the best global talent across all key digital technologies like smart devices, cloud and edge computing, big data, artificial intelligence, IoT, robotics, blockchain, and augmented reality. These capabilities are not just powering the breakthrough scaling of all our own businesses, but we are well poised to spearhead India's transformation into a leading digital society. India can lead the world with digital solutions that solve humanity's biggest problems today, like education, healthcare, agriculture, governance, and sustainable development. I will have a lot more to share about these opportunities next year. Our media business achieved its highest growth last year on the back of strong engagement, resulting in record subscriptions and advertising revenues. Our national channels, CNN News 18, CNBC TV 18, and News 18 India are consistently ranked number 1. Money Control is among the world's most popular subscription products. Our news brands are innovating with novel storytelling methods across platforms, building deeper relationship with audiences wherever they are and whatever device they use. Our entertainment arm, Viacom 18, consolidated its leadership position with a high decibel entry into sports, bagging the digital rights of IPL for 5 years. Along with key sporting rights in football, badminton, basketball, tennis, and now cricket, Viacom 18 is also aggressively investing in movie rights and original content for OTT. In news, entertainment, and sports, digital is a core and fast-growing theme as we prepare to embrace the 5G revolution. Our partnership with Bodhi Tree, James Murdoch, Uday Shankar, and Paramount Global will help Viacom 18 with additional talent bandwidth and enable us to create a world-class media and entertainment business. Dear shareholders, let me congratulate the entire leadership team at Retail on achieving a proud record of rupees 2 lakh crore turnover and EBITDA of 12,000 crores. Today, Reliance Retail is among the top 10 retailers in Asia. Reliance Retail's purpose is to serve millions of customers every day by providing them with unlimited choice, outstanding value proposition, superior quality, and unmatched shopping and delivery experience through our physical stores, merchant partner stores, digital, and omni-commerce platforms. Our business model also has Panch Pran, 5 imperatives. First, focus on enriching customer experience across digital and physical at each touch point using technology. Second, operationalizing and growing multiple channels to increase our reach to serve our customers across India, especially the underserved rural India. In this endeavor, our strategy is to integrate with millions of small merchants and provide them a platform to prosper. The aim is to bring them
to become an integral part of the widest distribution portfolio across the country so that they can provide the same choices to their customers that are available in big cities. Third, deepen the categories that we operate in so that we can offer maximum choice on a continuous basis to our customers across all strata of the community. We will do this by investing in design, value, service, and experience to empower customers and make our customer experience better. Fourth, expand our product portfolio. We will partner and integrate with all brands, small producers, and MSMEs so that we can source from the widest range of quality products for our customers. We extend our product and design capability to MSMEs so that they can offer products of the highest quality across different price points and enhance the choice to customers. And fifth, strengthen our logistics and supply chain capabilities, establish a strong technology-enabled supply chain capable of moving products across geographies in India in the most efficient manner, eliminating inefficiencies and waste, pass on the benefits to our customer. I now invite Isha as the leader for the retail business to provide an update on the retail business. Thank you, Chairman. It is my privilege to give you an update on the progress that Reliance Retail made last year. We served over 200 million registered customers, equal to the entire population of the UK, France, and Italy at Reliance Retail's physical stores and digital platforms. We welcomed 520 million walk-ins to our stores, a growth rate of 18% year-on-year, and 4.5 billion visits to our digital platforms, up by 2.3 times year-on-year. Our digital commerce platforms continued its growth with average daily orders of nearly 6 lakh orders being delivered every day, an increase of 2.5 times over last year. JioMart, delivering in over 260 towns, was rated as India's #1 trusted brand for online groceries. JioMart works on a hyper-local delivery model and is India's largest deployment of an omni-channel capability. We opened over 2,500 stores in the year, and that takes our store count to over 15,000 stores and an operational area of 42 million square feet. We built an extensive supply chain network with modular design and best-in-class automation. We doubled our warehousing and fulfillment space to 670 million cubic feet, linking supply locations with demand centers across the country. We generated employment for more than 150,000 people during the year, taking our total employee base to over 360,000. We invested in acquisitions and partnerships during the year to enter new categories, strengthen our service capabilities, and extend our reach to new markets. We continue expanding our reach to more customers through the addition of store networks and merchant partners. We have accelerated our new commerce initiative, which is powered by the true spirit of inclusion. Since our launch 2 years ago, we have grown our merchant partner base to over 20 lakh partners. We add about 150,000 partners a month and are on course to partner with 1 crore merchants as we expand our presence to cover the entire country, serving over 7,500 towns and 5 lakh villages in the next 5 years. Our grocery business is the largest of its kind in the country, serving the daily needs of our customers through a network of nearly 2,500 stores, and also JioMart and Milk Basket as our digital commerce platforms. We launched Fresh Pick, a gourmet format, and rolled out 7-Eleven for on-the-go customers. During the year, we strengthened our own brand's presence by launching several new products across the categories of staples, home, personal care, and general merchandise. Further, we launched our WhatsApp JioMart partnership, which I would now like to demo to you. Let me now open my WhatsApp.
To start your shopping experience, you can simply say hi to the JioMart SmartBot in WhatsApp, and JioMart will send you a link to get you started. I already have this link, so I'm going to click on it to get started. Immediately, we're transported from the usual chat interface of WhatsApp to a more visually engaging shopping experience. From here, you can browse the entire JioMart catalog, which is neatly organized into categories and subcategories. I want to buy something new. Let me add a dozen bananas to my shopping cart. An easier way to find the products that you want is to use the search option. Let me search for something. Aha, exactly what I wanted. Natural yogurt. Let me add this also to my cart. Now, let's look at the cart. You can see the dozen bananas and the yogurt. Let me now confirm my order. Since I'm a repeat customer, JioMart already knows my usual delivery address, and I can simply confirm. And now let me choose my payment method. I want to use WhatsApp Pay, but you can also use cash on delivery and other methods. Before I pay, I can once again verify my order. And since WhatsApp Pay is based on UPI, let me now enter my UPI security PIN. That's it. My order is now placed. I've also got my confirmation message, and as you can see, I was able to complete my entire shopping journey within WhatsApp itself, and that too within seconds. Of course, I will get updates on the order status until delivery. It was as simple as that. Dear share owners, our consumer electronics business has the widest network of over 8,700 stores across 7,000 towns. It is supported by over 200 dedicated rescue service centers, India's largest product and brand agnostic support and service ecosystem. Our digital commerce platforms of Reliance Digital.in and JioMart provide a comprehensive omni-channel network, enabling us to deliver 93% of our online orders from our stores within 6 hours. We rolled out our JioMart Digital initiative during the year. The platform enables small electronics merchants to sell the entire product portfolio of Reliance Retail on an assisted selling model, helping them deliver superior customer experience and growing their own income. We strengthened our own brands business through launching 600 new SKUs during the past year. These were across the categories of TVs, home, and electrical appliances. Our fashion and lifestyle business has the widest physical reach with nearly 4,000 stores in over 1,000 towns. Ajio, our integrated omni-channel platform, is one of the most loved fashion destinations with 80% of purchases from repeat customers. Ajio Business, our new commerce initiative, works with merchant partners across 3,500 towns, giving them access to a collection of over 8,000 regional and national brands in addition to a wide portfolio of our own brands. Last year, we sold over 43 crore garments, which is enough to clothe the entire population of the US and Canada. Last year, we further strengthened our product portfolio by entering into categories like lingerie, saris, and home furnishing, and have quickly scaled to establish significant positions in each of them. Our strong design and sourcing ecosystem has enabled us to grow our own brands across apparel and footwear. Our own brands contribute to over 65% of overall revenues. Reliance Brands continues its journey of expanding its luxury and premium brands portfolio by bringing more global brands to Indian customers. We have acquired and partnered with some of India's top names in couture and fashion through a curation-led approach to better serve the luxury customer in India and internationally. A year ago, we made an entry into pharmacy retail with the acquisition of NetMeds. During the year, the business launched new commerce operations through NetMeds Wholesale and onboarded merchants across 1,900 towns. I'm excited to announce that this year, we will launch our fast-moving consumer goods business. The objective of this business is to develop and deliver products that solve every Indian's daily needs
with high-quality products at affordable pricing. As part of our commitment to India's rich culture and heritage, we will soon start marketing quality goods produced by tribals and other marginalized communities across India. This will not only provide these communities with gainful opportunities for employment and entrepreneurship, but also help preserve the incredibly rich talent, skill sets, and knowledge base of our traditional Indian artisans, especially women. Finally, on behalf of the entire retail team, I would like to end by reiterating our commitment to exponentially grow this business in the years to come. Thank you. Thank you, Isha. Dear shareholders, I am confident that Reliance Retail and its leadership team, led by Isha, would deliver exponential growth and become the largest segment within the group. I wish them all the very best. Dear shareholders, let me congratulate our oil and gas team for a spectacular turnaround, with production jumping 9 times and revenues crossing $1 billion. With 19 million standard cubic meters per day of production in ultra-deep water fields, KGD6 is contributing 20% of India's domestic gas production. With the MJ field commissioning, by end 2022, KGD6 would contribute nearly 30% of India's gas production and help meet India's growing demand, leading to an import saving of nearly $9 billion per year. This is a major source of clean and affordable energy for India, particularly in times of a significant global energy crisis. Dear shareholders, our O2C business crossed rupees 5 lakh crore in annual revenues. The EBITDA of our O2C business crossed rupees 50,000 crores. We are committed to maximize oil to chemicals integration and convert our advantageous feedstock streams to value chemicals and materials. I am pleased to share that over the next 5 years, we will invest rupees 75,000 crores and expand capacities in existing and new value chains. First, in the polyester value chain, we will build one of the world's largest single-train PTA plant of 3 million tons per annum capacity at Dahej. We will also invest in 1 million ton a year PET plant at Dahej. Both PTA and PET will be targeted for completion by 2026. We will also reinvest in polyester filament yarn and polyester staple fiber. Polyester expansion with a capacity of over 1 million tons will be completed in phases by 2026. Second, in the vinyl chain, we will more than triple our existing capacity by adding world-scale plants at Dahej and Jamnagar in India and the UAE. We target to complete 1.5 million tons of feedstock integrated PVC expansion at Dahej and Jamnagar in phases by 2026. We will also add capacities to make EDC and PVC at Ruwais, UAE, as a part of the TA'ZIZ chemical zone. This will be in partnership with ADNOC and ADQ and targeted at fulfilling domestic demand of the region. With these expansions, Reliance will be amongst the top 5 producers of PVC globally. Third, consistent with our vision for new materials, we will build in phases India's first and one of the world's largest carbon fiber plants at Hazira, with a capacity of 20,000 metric tons based on acrylonitrile feedstock. We will commence acrylonitrile production next year and aim to complete the first phase of the carbon fiber plant during 2025. We will further integrate our composite business with carbon fiber to produce carbon fiber composites. Besides other applications, carbon fiber composites are also used to meet the rapidly growing lightweighting requirements for mobility and renewable energy. Thus, carbon fiber promises to be a multi-decade growth engine for O2C. Friends, Reliance has championed the cause of sustainability through circular economy and is a leader in India's recycling of polyester and plastics. We will strengthen our leadership position in PET recycling by more than doubling our bottle recycling capacity
to 5 billion bottles a year. I'm further pleased to share that our scientists have also developed pathways to produce biodegradable and compostable plastics to completely replace single-use plastics. Dear friends, Reliance has commenced its journey to become net carbon zero with a set of concrete actions. Let me present one such initiative being pursued towards replacing fossil fuels with renewable alternatives. We have extensively started consuming biomass as a fuel to produce green energy at scale. I am pleased to share that within a span of just 1 year, we have replaced almost 5% of energy consumption at the Dahej and Hazira sites by green power and green steam. Within 1 year, the renewable energy consumption at Reliance jumped by 352%. I feel confident that such initiatives, coupled with transition to renewable power for our O2C assets, will accelerate our journey to become net carbon zero. Dear share owners, I now come to our new energy business, our newest growth engine. An engine driven by our We Care philosophy for our beautiful and bountiful planet. The advent of the Industrial Revolution about 250 years ago triggered a continuous wave of economic growth across the world. But this growth has come at a great cost to our environment. Climate change has endangered the very future of both human life and every other form of life. Clearly, this model of growth is no more sustainable. Fortunately, technological breakthroughs have offered a reliable promise and a massive opportunity to mitigate this danger. I have always believed that businesses, especially large businesses, have a responsibility to solve the biggest and the most complex problems facing humanity. It is out of this sense of responsibility towards Mother Earth that we launched our new energy business last year. Decarbonizing the global economy will require multi-decades of investments in green and clean energy to the tune of $5 trillion per year globally. This also offers unprecedented opportunities for multi-decade growth. The sheer magnitude of this responsibility has made our new energy business far more ambitious, far more transformational, and far more global in scope than anything that Reliance has ever done before. Friends, I am happy to share that we have made rapid progress. We have laid a strong foundation to realize our vision. We are well on our way to create a manufacturing ecosystem which will be fully integrated with secure and self-sufficient supply chains. It will be backed by world-class talent and capabilities built on the pillars of technological innovation through strategic partnerships. It will deliver modular, at scale, affordable, and the most modern green energy manufacturing business based in India for India and the world. These capabilities will enable us to replicate our success with our partners globally. Friends, last year I had announced setting up of the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex in Jamnagar. The work done so far has reaffirmed my conviction in solar energy and has provided further impetus to our investment thesis to establish 4 gigafactories. First, for photovoltaic panels. Second, for energy storage. Third, for green hydrogen. And fourth, for the fuel cell system. Today, I would like to announce our new gigafactory for power electronics. One of the key components linking the entire value chain of green energy is affordable and reliable power electronics. We are building significant capabilities in design and manufacture of power electronics and software systems, integrating with our capabilities of telecommunications, cloud computing, and IoT platforms. We will build this through partnerships with leading global players
to provide most affordable solutions, meeting global standards of performance, safety, and reliability. In addition to solar energy, we are also actively progressing on bioenergy, offshore wind, and other non-conventional forms of renewable energy, and will continue to expand our manufacturing ecosystem. Let me further elaborate on progress made in building our manufacturing ecosystem. We have invested and partnered with leading companies globally in solar, battery, and electrolyzers. With each of these partnerships, we gained access to unique technology and know-how, and an eager and vibrant talent pool ready to disrupt the world. For solar PV manufacturing, we have acquired a 100% stake in REC Solar. REC brings 25 years of commitment to solar industry. It is a global leader in solar manufacturing, providing highest efficiency solar panels with heterojunction technology. It is a recipient of the prestigious Intersolar Award 2022, akin to the Oscars in the solar world, and has 1,400 plus employees globally spearheading innovation and manufacturing excellence. It has sold over 40 million panels till date for every application, including for rooftop markets in US, Europe, and Australia. REC is expanding its current 1.2 gigawatt annual module capacity to 1.8 gigawatts in Singapore. The technology for solar PV is constantly evolving. We have a defined improvement roadmap to stay ahead, targeting to increase the HJT module efficiency to 26% by 2026 from the current 23%, and further improving it to 28% through innovations like perovskite tandem cell technology. We also aim to extend the life of the PV modules from 25 to 50 years. Our 10 gigawatt solar PV cell and module factory at Jamnagar, based on REC technology, will commence production by 2024. And we are targeting to scale up to 20 gigawatt annual capacity in a phased manner by 2026. This will be the first of its kind of quartz to module facility globally, from quartz to metallurgical silicon, to polysilicon, to ingots and wafers, and integrated with cell and modules. Further, we will invest in glass and POE film manufacturing, both having natural synergies with our chemicals and materials businesses. This will provide supply security, unparalleled cost advantage, and ability to capture chain margins with maximum recycling. We will continue to strive for manufacturing excellence and innovation through our technological collaborations and partnerships with leading startups globally. Friends, as I talked about it last year, we see batteries as an integral part for providing long-duration energy storage for grid-scale renewable energy. They are also critical to promote green mobility and stationary applications for residential and commercial use. This has further reinforced our ambition to create an end-to-end battery ecosystem, from battery materials to cell manufacturing, leading up to packs and battery management systems to deliver safe and reliable batteries with high energy density and fast charging capabilities. We have formed a strategic partnership with Lithium Works, Faradion, and Ambri, each of them being an industry disruptor, with superior chemistry leading to better performance, and most importantly, with less or minimal dependence on noble metals, ensuring supply security of raw materials. Lithium Works provides an integrated portfolio of high-performance LFP solutions with a unique history of 30+ years of battery experience and innovation. Faradion
with its globally leading sodium-ion battery chemistry, provides us with a further opportunity to disrupt the battery markets. Ambri is a world leader in long-duration energy storage solutions based on liquid metal technology built for grid applications with 20+ years of lifespan with minimal fade. Our deep understanding and knowledge of chemistry and materials will add to our competitive advantage in setting up our world-class battery manufacturing facility. We aim to start production of battery packs by 2023 and scale up to a fully integrated 5 gigawatt-hour annual cell-to-pack manufacturing facility by 2024 and further scale up to 50 gigawatt-hour of annual capacity by 2027. My dear shareholders, Reliance is not new to hydrogen and is one of the largest producers of grey hydrogen globally. We have partnered with Stitesal to closely collaborate in accelerating cost reduction and commercialization of their pressurized alkaline electrolyzer technology. In addition, we are in advanced discussion to partner with other leading electrolyzer technology players globally to set up giga-scale electrolyzer manufacturing facility at Jamnagar. We will complement our partners' technological innovation in stack manufacturing with our engineering skills, operations skills, long-standing experience in efficient seawater desalination, digital twin expertise, and indigenized balance of plant with a singular aim to deliver green hydrogen at the lowest cost. We aim to progressively commence transition from grey hydrogen to green hydrogen by 2025 after proving our cost and performance targets. As I briefed earlier, Reliance is actively working on bioenergy. We are one of the largest users of agro-waste as a fuel to meet our captive energy needs, and we aim to build on this further through use of newer and emerging technologies and innovation. I am happy to inform you that Reliance has inaugurated Phase 1 of its Bioenergy Technology Center at Jamnagar on 15th August 2022. I will further update you on the progress in this area in the coming years. Dear shareholders, our captive requirements across businesses provide us with a large baseload demand to support our plans to set up giga-scale manufacturing and to accelerate our commitment to invest 75,000 crores towards establishing a fully integrated new energy manufacturing ecosystem in Jamnagar. We will also be establishing a 20 gigawatt of solar energy generation capacity by 2025. This will be entirely consumed for our captive needs of RTC power and intermittent energy for green hydrogen. Once proven at scale, we are prepared to double the investment to scale up our manufacturing ecosystem. As always, we will develop our new energy business by getting our first principles right, and we believe that we have all the right ingredients in place. First, we have over 2,500 scientists, engineers, and professionals working passionately to deliver our new energy vision, and we aim to expand it tenfold in the next few years. Second, we are expanding our partnership with the world's leading startups and academic institutions to collaborate and innovate for future. Third, our large captive requirements across our businesses enable us to scale rapidly. Fourth, in collaboration with global EPC players, we will repurpose our proven capabilities in project management and combine physical and digital technologies to deliver lowest cost of green energy. Fifth, our new energy business model will be modular and replicable across the globe. As a result of these combined strengths, our new energy business will help India become a net exporter of green energy. It will also strengthen indigenous R&D base
and make India a reservoir of intellectual property. Most importantly, Reliance aspires to make India a world leader in new energy manufacturing and a credible alternative to China. Of course, we have a long way to go, but we are approaching this business with utmost sincerity, dedication, commitment, and focus. The work done over the past 1 year gives me immense confidence that we will make this ambition a reality in the shortest possible time. India's transition, as also the world's transition from fossil fuels to renewables, will provide Reliance with an opportunity for continuous hyper-growth over many decades. Our Reliance Foundation continues to do outstanding work on all their focus areas. May I now invite Isha Ambani to update us on the plans of the foundation. Thank you, Chairman. Dear shareholders, I would now like to share Reliance Foundation's impact and plans. Under the leadership of my mother, Srimati Neeta Ambani, Reliance Foundation has carried out a range of activities in addition to our extensive COVID relief initiatives. This past year, Reliance Foundation touched the lives of over 63 million people across 60,000 villages and urban locations across India. In rural transformation, we have helped over 14.5 million people earn better livelihoods and lead better lives. In disaster management, our teams provided support to over 1 million people in overcoming 47 natural disasters across 19 states and 3 union territories. In healthcare, Sir H.N. Reliance Foundation Hospital has earned the reputation as one of the best healthcare institutions in the world. And we have accelerated the rollout of our remote health consultations. In education, in addition to continuing our focus in the various programs and initiatives, I'm happy to share the launch of 2 new institutions. Geo Institute has commenced academic sessions this year. We welcomed the first batch of 120 students last month for postgraduate programs in artificial intelligence, data science, and digital marketing. And we will launch the Neeta Mukesh Ambani Junior School as an expansion to the Dhirubhai Ambani International School this year. This year, we will also be scaling up our efforts to support early childhood care and education to benefit millions of children, especially from underprivileged communities. We are partnering with international organizations to address learning losses in the foundational literacy and numeracy amongst children due to the pandemic. And we are partnering with global and Indian organizations in women empowerment to empower 10 lakh women entrepreneurs in rural communities in 3 years, and additionally to create new solutions for digital inclusion for over 3 lakh women. Sports continues to be a key focus area for us. Through our Education and Sports for All program, we have so far touched the lives of 21.5 million children and youth in India. Reliance Foundation recently partnered with the Indian Olympic Association to support our athletes at the Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games, and National Games. It is very exciting that through this partnership, we will be hosting the first ever India House at the upcoming Paris 2024 Olympics. This will be a great opportunity to showcase India's immense talent, potential, and aspiration to the Olympic world. We are working on a 10-year blueprint for our foundation that will be bigger and more impactful, and will share the plans with you in the coming year. I would once again like to thank my mother for her dedication and energizing leadership to the entire team at the Reliance Foundation. Thank you. Thank you, Isha. At Reliance, business and philanthropy go hand in hand. Both are inspired by the same we care philosophy to improve the lives of our people so that no Indian is left behind. All my most valued stakeholders, I shall conclude
with something that is very close to my heart and is absolutely critical for the ever-expanding growth of Reliance in the decades to come. Reliance began its journey as a listed company 45 years ago. It was small, very small when it was born. A single-room office with just 2 tables and a shared landline phone in a crowded marketplace in old Mumbai. And our founder and my father, Shri Dhirubhai Ambani, had a mighty big vision and soaring ambition. Also, an indomitable willpower to translate his vision into action, surmounting the stiffest of obstacles that came his way. Today, Reliance has grown into one of the world's largest and most valuable business enterprises. Indeed, it has become the pride of India as a national institution. But I would like everyone in our Reliance family to always remember 2 things. 1, even when Reliance becomes much bigger in the future, which it surely will, it will always carry our founders' pioneering spirit. 2, even when Reliance further expands its global footprint in the future, which it surely will, it will retain its Indian soul and its proud Indian identity. Patriotism inspires and energizes everything we do every single day in Reliance. Dear friends, it has been my personal privilege to have attended every single AGM of Reliance in the past 45 years. This year, 2022, is a happy milestone in my 45-year-long association with Reliance. I complete 2 decades of serving your company as its chairman. All of Reliance's achievements have been on account of the fabulous team of leaders and professionals I have been fortunate to work with. I remain forever grateful to each and every one of them. When my senior colleagues and I look back, Reliance's story reads like an unputdownable book with never-ending chapters of success. Every decade, every year, new chapters of achievements are getting added. We have collectively succeeded in growing Reliance from strength to greater strength only because each one of us in the leadership team have internalized the founder's mindset. What do I mean by the founder's mindset? It means working incessantly to preserve and further enrich the purpose, philosophy, and passion of Dhirubhai Ambani. I would like to state this philosophy in terms of 10 principles of building our unique leadership capital now and in the future. First, people capital. Reliance's greatest strength is our human assets, not just our financial assets. The greatest value creators are brains, not machines. Second, technology and innovation capital. In this age of exponential change, mastering latest technology is not an option. It is an imperative for survival and disruptive growth. Third, capability capital. Reliance judges its leaders by their expertise to plan, execute, review, and improve. Indeed, New India needs leaders whose capability must always exceed the complexity of the problem they are expected to solve. Fourth, achievement capital. Reliance rewards and honors overachievers, but aiming low is not acceptable. Fifth, relationship capital. We fully understand that people are not robots and money is not the sole motivation that drives them to deliver peak performance. Healthy interpersonal relations create happy organizations. Sixth, trust capital. Reliance places highest value on trustworthy people. For organizations as well as individuals, there is no better way to earn respect than to be trustworthy. Seventh, cooperation capital.
This means 1 + 1 becomes 11. When people cooperate and teams collaborate, it's an integral part of our SOP. Eighth, empathy capital. The world is increasingly coming around to realize that powers of the heart are superior to powers of a cold, rational mind. Compassionate capitalism needs compassionate leaders. Ninth, integrity capital. Honesty and uprightness are non-negotiable principles at Reliance. And 10th, community engagement capital. Lastly, we recognize that serving the community that supports and sustains us is our corporate moral responsibility, not just a legal corporate social responsibility. These are the 10 tenets of leadership building in Reliance. By scrupulously following these 10 tenets, we have nurtured Reliance's unique institutional culture. It's because of this institutional culture that Reliance has so far been a super success. Maintaining this institutional culture to achieve perpetual growth is the most challenging task before our existing and tomorrow's leadership team. Dear shareholders, we are living in an era of technological breakthroughs at an unprecedented pace. For businesses that are agile and disruptive, this era offers unimaginable opportunities for growth and value creation. Others will become stagnant and get left behind. We have to be future-focused with a firm resolve to make the future much brighter than our present and the past. That is why we must continually strengthen the culture and the foundation of our institution. But there is also another equally important reason which is compelling us to do so with utmost priority. With the completion of 75 years of freedom, our country will begin its march into the future with bolder and more confident steps. New India is poised to become one of the top 3 economies in the world with a size that can be 4 or 5 times bigger in the next few decades. It is not a question of if, but when. India's rising prosperity will create almost limitless multi-decade growth opportunities for Reliance. Simultaneously, the developmental aspirations of 1.4 billion Indians are surging explosively. They want to live in a more inclusive India, a more equal India, in short, a better India. As a result of these two phenomena, New India will make ever higher demands on Reliance, indeed, on all big businesses. Reliance must quickly and vastly increase its contribution to the prosperity of India and the well-being of all Indians. Therefore, aware of this enormous responsibility, are going to give our very best over the coming years to enrich Reliance's leadership capital and institutional culture. We are creating an operating model for all our businesses that will create value in perpetuity. Dear shareholders, at a time when a bright future is beckoning Reliance, what gives me optimism about ability to realize our dreams is our huge reservoir of young, dynamic, and best-in-class talent. Our next generation leaders are taking over the reins confidently across businesses, verticals, and horizontals. Akash and Isha have assumed leadership roles in Jio and retail. They have been passionately involved in our consumer business since its inception. Anant has also joined in our new energy business with great zeal. In fact, he is spending most of his time in Jamnagar. All three have fully inherited our founders' mindset. They are first among equals in a young team of leaders and professionals who are already doing amazing things at Reliance. My leadership team is also empowering our next-gen leaders by giving them a larger canvas to work on and greater responsibilities to fulfill. Of course, all of them are being mentored on a daily basis by our senior leaders, including myself and the board of directors.
And let me add here that Reliance is forever hungry for top-notch talent from India and around the world. We invite them with an assurance that they will enjoy the finest work environment in the world so that they can develop their innate potential in an unconstrained way. We already have professionals representing over 60 nationalities, and this pool of young talent will become even larger and deeper as our businesses become bigger and more global. All our next-gen leaders are determined, focused, and brimming with fresh ideas and creativity. They think big and they think fast. They have the courage to dream as well as the ability to execute. And above all, they have humility, empathy, and they care. When I see them, I see Dhirubhai Ambani's pioneering spirit in action. I feel supremely confident that tomorrow's Reliance will have a better army of leaders, as should happen in any dynamic organization that empowers its young leaders. Together, they will script newer and more exciting chapters to Reliance's never-ending book of achievements. I now call upon you to extend your blessings and best wishes to all of the hundreds of young leaders of Reliance, including Isha, Akash, and Anant. Dear stakeholders, I have always believed that the interests of an institution must always override those of any individual or family. Keeping this in mind, we will create a robust architecture for tomorrow's Reliance to ensure that it remains a united and well-integrated institution, even as we develop our existing businesses and add new growth engines. This architecture will maximize the synergies among all our existing and new businesses. We have already put in place a fail-safe governance system to ensure accountability at all levels. We will keep on improving this system on a continuous basis to protect the interest of all our stakeholders. Even as I continue to provide hands-on leadership to your company as before, my existing team of leaders and I, along with our board of directors, shall dedicate ourselves to making the institutional culture of Reliance more robust, more resilient, more purpose-driven, and truly future-ready. And so that in the near term, Reliance more than doubles its value by the end of its golden decade in 2027, and thereafter continues to grow ever more rapidly. This is my solemn commitment to all of you, and I would like you to judge me and my existing and new leadership team by our performance. In this noble mission of Reliance to serve India and humanity, I seek Lord Krishna's blessings and your continued support. I would like to thank the central and the state governments, shareholders, investors, joint venture partners, lenders, suppliers, and customers for their consistent and resolute support. I thank all my colleagues on the board for their oversight in this crucial phase of our growth and their support and immense encouragement. I have special words to acknowledge the collective efforts of the entire Reliance team working tirelessly to create and sustain a world-class enterprise. Thank you. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम बड़े खुलासे आपने सुने हैं। आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने कहा कि एक तरह से सक्सेशन प्लान भी सामने निकल कर आ रहा है। आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी को सीनियर लीडर से मेंटोर किया जाएगा। आकाश अंबानी को जिम्मा दिया गया है, एक लीडरशिप रोल इन्होंने संभाल लिया है जियो का। ईशा अंबानी रिटेल कारोबार काफी बखूबी का संभाल रही है और अनंत अंबानी दरअसल न्यू एनर्जी बिजनेस को संभालते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट ये एक सक्सेशन प्लान का इंतजार बाजार को भी था। अब इन तीनों नए चेहरों को दरअसल मेंटोर किया जा रहा है लीडरशिप टीम के द्वारा और ये कंपनी की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। O2C बिजनेस हम देख रहे हैं, वहां पर बड़ा निवेश, 75,000 करोड़ का निवेश, जियो के 5G लॉन्च का ऐलान, FMCG बिजनेस में रिलायंस रिटेल जल्द उतरता हुआ दिखाई देगा।
कई सारी चीजें निकल कर आई हैं इस 45वीं एजीएम में। स्टॉक आपके सामने 2600 के आसपास टिकता हुआ। आज वैसे भारतीय बाजार का दिन थोड़ा सा नरम था, तो फटाफट से मार्केट की क्लोजिंग भी आपके लिए लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे रिलायंस एजीएम की हाइलाइट्स की। लेकिन देखिए, दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे मार्केट्स में 5G की सेवा शुरू होने वाली है। 5G को लेकर काफी अग्रेसिव प्लान्स है, क्वालकॉम के साथ भी करार किया है। ये तमाम डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे और क्या मायने हैं एक शेयर धारक के लिए और स्टॉक प्राइस के लिए, उस पर आएंगे। फिलहाल आप देखिएगा 2600 पर जाकर टिका है रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर। हल्की सी नरमी। बाजार का दिन आज खराब था क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में दबाव देखने को मिला। तो निफ्टी कुल मिलाकर 17312 पर टिक रहा है, 246 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक में आज हमने देखा 700 अंकों तक की गिरावट पर कारोबार टिकता हुआ। डे लो से एक पुल बैक आया है, वो एक अच्छा संकेत है। 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी डे लो से आता हुआ। सेंसेक्स की भी चाल आप देखिएगा, 860 पॉइंट नीचे, लेकिन लगभग सुबह में 1400 अंकों तक का नुकसान भी देखने को मिला था। तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी संभली है। आईटी काउंटर्स में हमने देखा सबसे ज्यादा मारकाट मची क्योंकि आज दरअसल नैस्डैक से हमने क्यू बहुत ही नेगेटिव लिया था। आईटी का एक्सपोजर यूएस इकोनॉमी में अच्छा खासा है, तो ये पूरा पैक भी पिटता हुआ। तो टेक्नोलॉजी हो, बैंकिंग काउंटर्स हो, मेटल्स हो, इन सब में प्रेशर देखने को मिला। वेरी क्विकली आपकी स्क्रीन पर हीट मैप लेकर आते हैं। स्टॉक्स का क्या हाल था वो आपके सामने पेश करेंगे, फिर डिटेल में बात होगी रिलायंस की, एजीएम की। तो ये देखिए, सपोर्ट कहां से मिला? चुनिंदा कंजम्पशन थीम से। मारुति, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स थे जहां पर हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। ऑटो में एमएनएम भी चला है, हीरो मोटोकॉर्प में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन बहुत ही फ्लैट कारोबार। ज्यादा कुछ एक काउंटर्स तेजी में कर नहीं पाए क्योंकि नीचे टेक महिंद्रा खींच रहा था, 4.5% का नुकसान। इन्फोसिस 4% नीचे, तो विप्रो में हमने देखा है 4% की गिरावट। एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे काउंटर्स में भी 2.5 से 3% तक का नुकसान देखने को मिला। बैंकों में एचडीएफसी बैंक, कोटक जैसे काउंटर्स, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स, ये सब कमजोर रहे हैं बैंक फाइनेंशियल स्टॉक्स में, जहां पर बिकवाली बढ़ती हुई। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक पर तो कई सारे मंदी के कॉल्स भी आ रहे थे। 1.5% का नुकसान यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। तो जिन स्टॉक्स ने दरअसल मार्केट को ऊपर खींचा था, हाल फिलहाल में वहीं पर आज सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दरअसल जो अमेरिकी बाजार हैं उनके फ्यूचर्स में अभी भी नेगेटिव कारोबार ही देखने को मिला, तो वहां पर शुरुआत भी कमजोर रहेगी। तो बाजार को इन लेवल्स पर हम छोड़ जाएंगे। 17312 पर दरअसल आज दिन टिका है ग्लोबल मार्केट्स के सेल ऑफ के बीच। चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले वीरू को जोड़ लेते हैं। वीरू, इन लेवल्स के मायने बताइए, 300 को होल्ड करना कितना अहम था? जी देखिए हर्षता, ये क्लोजिंग डैमेज कंट्रोल तो काफ़ी हुआ है। सुबह सुबह आपकी ट्रैजेक्टरी थी करीब 17,180 की, 17,150 की, वहाँ से आपने कम से कम जो कैंडल थी वो ठीक ठाक क्रिएट हुई है। और मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी हर्षता बहुत क्लोज हुआ है, क्लोज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, और स्पेशली 23 अगस्त के लो को वॉलेट ना करना। तो आई थिंक आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट से हमें आज एक डिप मिला था सुबह सुबह गिफ्ट स्वरूप, उस पर हमने ठीक ठाक तरीके से रिएक्ट किया। ये एक अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप देखें लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी वाली क्लोजिंग थी। चलते हैं हर्षता के पास एक बार फिर से। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा पैनल जो है हमारे साथ इस एजीएम की बारीकियों को, घोषणाओं को बारीकी से आंकने के लिए तैयार है। हर्षदा, जुड़ गए हैं इस खास पेशकश में। तो रिलायंस की 45वीं एजीएम, बड़े खुलासे हुए हैं अलग अलग बिजनेसेस को लेकर। काफी ज्यादा डिटेल्स आए हमारे साथ। इस विश्लेषण में शामिल हो रहे हैं संदीप होता, राजेश अग्रवाल, शरद अवस्थी और साथ ही साथ आगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम को भी जोड़ेंगे। लेकिन पहले यतिन के पास चलते हैं जो आपको फटाफट वो हाइलाइट्स देंगे इस एजीएम के, जो दरअसल यहां से आगे स्टॉक को करने वाले हैं ड्राइव। यतिन। तो हर्षदा, जहां तक कि 45वीं एजीएम का सबसे बड़ा टेक अवे है वो है सक्सेशन प्लानिंग। अगर हम बात करें एजीएम स्पीच की, तो यहां आपको जो 3 चेहरे दिख रहे हैं वो हेल्म पे रहेंगे। कौन से सेगमेंट्स को कौन कौन संभालेगा वो क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट से आ गया है। ईशा अंबानी रिटेल कारोबार की तरफ ध्यान देगी, लीडरशिप रोल में है वो। आकाश अंबानी जो हैं वो जियो के चेयरमैन तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है, लेकिन यहां भी वो अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ क्लोजली वर्क करेंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट नाम
अनंत अंबानी जो न्यू एनर्जी कारोबार को नया दिशा देने में सक्षम रहेंगे। तो जहां तक कि तीनों बच्चों का सवाल है, चेयरमैन मुकेश अंबानी साहब ने क्लियर कर दिया है कि इस हिसाब से जो है वो लीडरशिप रोल आगे बढ़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहां से अपनी बॉटम लाइन को दुगना करना 2027 तक। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलायंस की वैल्यूएशन को दोगुनी करने का लक्ष्य है 2027 तक, ये भी एक चीज बाजार को पसंद आएगी। लेकिन अब सेगमेंटल चीजों पे ध्यान देंगे, खास करके जियो पे, जहां लगभग 2 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया गया है 5G के लिए। 5G की स्पेसिफिकली बात करें तो कंपनी ने लगभग 1000 शहरों में ऑलरेडी 5G रेडिनेस बताई है। दिवाली तक 5G लॉन्च भी हो जाएगा। जहां तक कि रिलायंस जियो का सवाल है, 5G का जो ऑपरेशन रहेगा वो स्टैंड अलोन बेसिस पे रहेगा, ना कि 4G को अपग्रेड करेंगे। 5G का जो पूरा नेटवर्क प्लानिंग है, पूरा लॉन्च प्लानिंग है, वो स्टैंड अलोन एंटिटी में होगा। इसका मतलब ये है कि 5G की सबसे बेहतरीन सेवाएं जियो देने में सक्षम रहेगा। आप ऑक्शंस की बात कर लीजिए तो 700 मेगाहर्ट्ज की जो बैंड है, वहां केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो इकाई ही एक बिडर है और एक सिंगल ओनर है, जिसके कारण हाई स्पीड ग्लोबल स्केल वाला आपको नेटवर्क कनेक्शन 5G में मिलता आपको नजर आएगा। दिसंबर 23 तक आपको पूरे देश में 5G सेवाएं रोल आउट होती हुई नजर आएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है रिटेल। जहां तक कि रिटेल और ग्रीन एनर्जी का सवाल है, यहां अच्छा केपेक्स होता हुआ नजर आएगा। ग्रीन एनर्जी में 75,000 करोड़ का केपेक्स यहां प्लान किया गया है और अपनी बैटरी पैक्स और काफी सारी जीरो नेट कार्बन बनाने की जो घोषणाएं हैं वो भी इस एजीएम में आती हुई नजर आई। जहां तक कि रिलायंस रिटेल का सवाल है, यहां फोकस करेंगे क्योंकि जो 1 करोड़ मर्चेंट्स को जोड़ने का सवाल है, 20 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स को जोड़ने का सवाल है, तो व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जहां वो जो जियो प्लेटफॉर्म के साथ व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई देगा। एफएमसीजी बिजनेस भी ये लॉन्च करेंगे, जहां जो खुद के ब्रांड्स हैं वो लगभग 60% के सेल्स को कंट्रीब्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। ग्रीन एनर्जी की बात हमने की, रिटेल की बात की, और जहां तक कि O2C का सवाल है, यहां भी पीईटी और पीटीए के प्लांट्स आने वाले हैं आगे चलते हुए, जहां 75,000 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी अनाउंस्ड है। तो जहां तक कि O2C कारोबार का सवाल है, यहां भी आपको गैस पे इंपॉर्टेंट खबरें नजर आती हुई लग रही है, क्योंकि जो करंट डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का, वो है 20%, जिसको 30% तक ले जाने की बड़ी योजना है। तो O2C कारोबार में नया एक्सपेंशन अनाउंस हुआ है और गैस के प्रोडक्शन को एक्सेलरेट किया जाएगा। लेकिन हर्षदा, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनका रोल जो है वो क्लैरिटी के साथ एजीएम में आया है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है वो है 5G, और जो आगे चलने वाले ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो रिटेल और जियो ही रहेंगे। जी हाँ, इनफैक्ट मार्केट भी इस सक्सेशन प्लान का इंतजार कर रहा था, तो उसी पर शायद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे यतिन, क्योंकि ये बड़ा ऐलान है। हमने हाल ही में देखा था आकाश अंबानी को वो कमान संभालने को कहा गया था जियो की, और उसके बाद अब ईशा अंबानी और अनंत अंबानी रिटेल और न्यू एनर्जी के लीडरशिप रोल्स में हैं। इनकी मेंटरिंग चलेगी कुछ समय के लिए एंड फिर ऑफ कोर्स, लेकिन अभी से ये लीडरशिप रोल्स में हैं। हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं और उन्हीं से सबसे पहले सक्सेशन प्लान को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़े बड़े ऐलान हुए हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। सुनील सुब्रमण्यम, एक म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं आप, दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जब एक सक्सेशन प्लान आता है और साफ हो जाता है कि कौन कौन सा बिजनेस संभालेगा, वो कितना बड़ा पॉजिटिव है? बहुत अहम चीज है ये, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अहम चीज होती है स्टॉक पिकिंग में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सक्सेशन प्लानिंग ठीक तरह से हो। नहीं तो हमें पता है कि पेरेंट कंपनी में क्या हुआ था जब धीरूभाई जी का देहांत हो गया, तो एक शायद उधर का जो रिपीट नहीं होने का है कि जो हुआ दो भाई के बीच और जो सिचुएशन हुई थी ना, तो ऐसी चीजें एक फैमिली ओन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्लैरिटी आप दे देंगे थे उनकी थॉट प्रोसेस, यानी सक्सेसर्स की थॉट प्रोसेस अब मिला के एक लॉन्ग टर्म तौर से मैं म्यूचुअल फंड में 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम तो मिनिमम रख के कुछ भी स्टॉक खरीदता हूं, तो मेरे को भी एक क्लैरिटी की जरूरत है कि क्या बिजनेस जैसे पहले चल रही थी वैसे चलेगी, या बदलाव है तो किस तरह से बदलाव आएगी, क्या थॉट प्रोसेस है डेट और इक्विटी लेने के ऊपर, बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर। तो ये सब चीज बहुत अहम चीज रहती है। एक नंबर में डालता हूं तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक तरफ, और दूसरी ये सॉफ्टवेयर इश्यूज जो होती हैं ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जरिए, तो ये सक्सेशन प्लानिंग में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्लैरिटी कभी भी मिल जाए ना तो उस एक कंपनी के लिए बहुत
पॉजिटिव चीज होती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स या इन्वेस्टर्स को उस कंपनी को इवेलुएट करने में। तो मैं समझता हूं कि ये इन एडवांस करना और क्लियर कट प्लानिंग करना एक बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट है। ऐसी चीजें फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के लिए अच्छा सपोर्ट दिलवा सकती है स्टॉक मार्केट से भी। बिल्कुल, अगर आप देखें महत्वपूर्ण बात है। तो जो पहला बिंदु था जिस पर हमने डिस्कशन किया वो था कि इस कंपनी में जो नई पीढ़ी है उसका समावेश कैसे होगा और इसको बाजार कैसे लेगा। तो यकीन मानिए आई थिंक इस एजीएम की सबसे बड़ी उपलब्धि और महत्वपूर्ण घोषणाओं में ये शामिल है। राजेश अग्रवाल जी, अब थोड़ा सा अगर आप देखें हर सेगमेंट पे आते हैं, सेगमेंट पे आके बात करते हैं। लेट्स फोकस ऑन जियो। देखिए, आई थिंक पूरी दुनिया शायद ये भी जियो की एक सेपरेट लिस्टिंग के बारे में सुनना चाह रही थी, लेकिन बड़ी बात ये थी कि उससे पहले जियो को अपनी 5G सर्विसेज जो सेवाएं हैं वो रोल आउट करनी थी। काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है, 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी करेंगे इस कारोबार में। और इन 4 शहरों के जरिए आप देख लिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में ये दीपावली पे लॉन्च भी हो जाएंगे और दिसंबर 2023 से अगर आप देखें पूरे देश में। अब आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और एक क्लियर रोड मैप अपनी जो 5G सेवाएं हैं उनको लेकर रोल आउट कर दिया है इस एजीएम के जरिए, आपका जियो पर टेक और उसकी घोषणाओं पर? देखिए, हम बहुत पॉजिटिव हैं, फिर वो चाहे रिटेल हो या जियो हो, ये 2 ही सेगमेंट ऐसे हैं जहां बहुत पॉजिटिव हैं। खास जियो की अगर बात की जाए तो जिस तरीके की रोल आउट की उन्होंने घोषणा करी, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र बहुत कुछ क्लैरिटी आई है। जैसे कोई कॉम्पिटिटर कंपनीज थी, उनके कुछ बयान आए थे कुछ दिन पहले, जो कहा गया था कि प्रीमियम कस्टमर्स को शुरुआत में 5G दी जाएगी। यहाँ अंबानी साहब ने ये कहा कि प्रीमियम कस्टमर्स को क्यों, सबको ही दी जाएगी। वो एक बहुत पॉजिटिव बात है। दूसरी अगर आप देखें तो क्लाउड बेस्ड जो कंप्यूटर सिस्टम का उन्होंने ऐलान किया है कि वो छोटे लेवल्स पे वो चालू करेंगे, वो एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से जिस तरीके से मोबाइल सर्विसेज ने एक पूरा ढांचा बदल दिया था, मुझे लगता है ये जो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है इस वक्त हो सकता है कि बहुत छोटा नज़र आ रहा हो, लेकिन आगे जाते हुए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, खास करके छोटे और मध्यम बिजनेसेस के लिए। मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत आगे तक इनको लेके जाएगी। खास करके 5G की लॉन्चिंग की जो क्लियर रोड मैप आ गया है और जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट ये किए हैं, गूगल के साथ इन्होंने जो टाई अप किया है सस्ते 5G मोबाइल फ़ोन्स के लिए, ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव होती हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो अभी जो 10 टेनेथ ऑफ लीडरशिप मुकेश अंबानी साहब बता रहे थे, उसमें एक चीज़ उन्होंने एक बात कही थी कि 1 और 1 11 होता है। तो 1 और 1 11 की अगर बात की जाए तो यहाँ जियो और साथ में गूगल अगर जुड़ता है तो ऑब्वियसली 11 हो जाएगा। तो 5G के तरफ से हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जियो को अगर आप देखो तो एक तरीके से नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर हो चुका है ऑलरेडी। सब्सक्राइबर नंबर्स बहुत हाई हैं। सर्विस प्रोवाइडर को बनाने में 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स का भी ऐलान किया गया। वो इनफैक्ट बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अगर आप इसे भारती से कंपेयर करेंगे तो भारती को बहुत ज्यादा फंड रेज करने पड़ सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसको कांटे की टक्कर देने के लिए जियो काफी अग्रेसिवली वो 5G में उतरता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट नंबर 1 कंपनी बनने का जिम्मा जियो, जैसे जियो ने अपने नाम ले ही लिया है। लेकिन O2C एंड ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी को लेकर दरअसल एक्स्ट्रा एडिशनल थ्रस्ट लेटली आया है, उस पर होता साहब संक्षिप्त में आपकी रिस्पांस चाहती हूं। ये स्टॉक में कितनी और नई ऊर्जा भरेगा, ये ग्रीन एनर्जी क्या नया करके देगी शेयर प्राइस में? तो डेफिनेटली जो इंटेंट है रिलायंस मैनेजमेंट का बहुत क्लियर है ग्रीन एनर्जी को लेकर, और दे आर गोइंग टू बी कार्बन जीरो बाय 2035। और ये 75,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, और ये कारगर साबित होगा नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में। ये कैन आउटसाइन कर सकता है ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को है, जिस तरह का उन्होंने कैपेक्स लगा रहे हैं और इंटेंट बहुत ही एग्रेसिव है। तो डेफिनेटली ये न्यू एनर्जी बिजनेस से बहुत बड़ा एक बिजनेस उभर के आ सकता है, और इसका जो ESG है उसके लिए भी ये पॉजिटिव रेटिंग लेके आएगा अगर ये अच्छा रैंप अप कर जाएगा आने वाले सालों में। शरद जी, अब आते हैं एग्जैक्टली, अगर आप देखें हमने O2C बिजनेस की बात करी, हमने जियो की बात करी। आई मीन ये वही ब्रांचेस हैं जो आगे जाके अगर आप देखें सेपरेट एक एंटिटी बन जाएंगी और आई थिंक एक स्वरूप लेंगी। रिटेल को लेकर आई मीन आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस
और साथ ही साथ अब FMCG कारोबार आप लॉन्च कर रहे हैं, उसमें उतर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये देखिए कि जिस तरीके से आप शॉपिंग एक्सपीरियंस को तब्दील कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप देखें शॉपिंग एक्सपीरियंस, मार्ट के साथ अगर आप देखें उनका करार भी हुआ है इस चीज़ के लिए, तो आप रिटेल उसको लेकर रोड मैप, उसकी लीडरशिप, उसका इन्वेस्टमेंट, इसकी जो घोषणाएं हुई हैं उसको देख के आपका पहला अगर आप देखें जो व्यू है वो क्या कहता है? प्राइमरीली रिटेल ऑब्वियसली एक बूमिंग स्पेस है इंडिया में, और जिस तरीके से इन्होंने रिटेल के शुरुआत में लोकल किराना स्टोर्स को अपने एम्बिट में लिया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था जिसकी वजह से बहुत फास्ट एक्सपेंशन हुआ पूरे नेटवर्क में। आने वाले समय में भी हम ये, आप जैसा कि उनके नंबर से भी खास जाहिर हो रहा है कि वो अग्रेसिव एक्सपेंशन ही करेंगे। प्लस चूंकि वो टायर 2 सिटीज पे या टायर 3 सिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे जो कि अंडर सर्व्ड है, वो एक एडेड एडवांटेज इनके लिए होगा लॉन्ग टर्म में। तो और ये एक ऐसी स्पेस है जो टोटली डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन रहने वाली है, और यहाँ पे ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन का ट्रेंड देखेंगे कि ग्रेजुअली 40% लोग लगभग अर्बन सेंटर्स में शिफ्ट हो जाएंगे अगले 10-20 सालों में, और तो इसका सबसे ज्यादा फायदा रिटेलिंग को मिलना चाहिए। और चूंकि ये टायर 2 टायर 3 सिटीज को भी कैटर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक अंडर सर्व्ड एरिया है जिसका इनको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। अब सुनील सुब्रमण्यम, उस लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अलग अलग बिजनेसेस से हमने एक्सपेंशन प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स सुन लिए हैं, लेकिन ड्राइविंग फैक्टर क्या होगा आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में गोइंग फॉरवर्ड? कौन सा बिजनेस? मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो आंसर नहीं कह सकता हूँ, मगर मेरे लिए न्यू एज बिजनेसेस जो है ना, वही एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इंडिया में देख रहे हैं, बिकॉज डिजिटलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस जो बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि द डिजिटल, तो मेरे को टेक्नोलॉजी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देकर उसको इतना अहम स्पीड से आके लेके जाना 5G को, तो ये अपने एक करीबन 2 लाख करोड़ का कैपेक्स, तो कैपिटल गुड्स से जीडीपी में भी ग्रोथ आएगी, स्पिन ऑफ बेनिफिट्स आएंगे इसके सप्लायर्स को। तो मेरे लिए ये न्यू एज जो भी चीज है ना, उसमें ही मेरे को बहुत दिलचस्पी है, और मैं मानता हूं कि यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक खास तरह से मिल सकती है। मगर सेकंड एक ओवरऑल चीज है कि जब एक कंपनी 3-4 दिशा में अपनी इसको फैलाती है ना, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो होता है वो क्रॉस सेलिंग का, क्योंकि अब ये कस्टमर एक्विजिशन का टाइम होता है, चाहे वो रिटेल के थ्रू, चाहे वो टेलीकॉम के थ्रू, चाहे जिसके थ्रू एक नए कस्टमर को अक्वायर कर रहे हैं। फिर आने वाले दिन में ना एक स्टडी मैंने देखा है कि एक नया कस्टमर को अक्वायर करने में समझिए कि आपको 40 रुपए लगते हैं, राइट, मगर एक दूसरे कस्टमर को क्रॉस सेल करने में आपको 8 ही रुपए लगते हैं, यानी खाली 20% में आप नया कस्टमर अक्वायर कर सकते हैं। तो ऐसी एक रिटेल एंड में देखें तो एक कस्टमर को किसी भी इंडस्ट्री से वो अंदर आ गए तो समझिए कि बाकी के प्रोडक्ट आसानी से क्रॉस सेल हो सकता है। ओके, सुनील जी, मैं एक सवाल इनफैक्ट संदीप होता से भी पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि क्लियरली जो न्यू बिजनेसेस है वो ड्राइविंग फैक्टर रहेंगे, उस लिहाज से संदीप होता, कल स्टॉक में अगर आपने एक व्यू लेना हो यहां से इन लेवल्स पर, अगर कोई खरीद रहा है, किस तरह के टारगेट्स, क्योंकि जो लास्ट टारगेट आया था वो 3180 का था CLSA की ओर से, वो कितना ऊपर बढ़ सकता है आज के अनाउंसमेंट सुनकर? देखिए, क्लियरली कोई बड़ा बिग बैंग अनाउंसमेंट तो नहीं आया है जिससे कि स्टॉक आजकल में मूव कर जाए, क्योंकि जो उम्मीद थी कि लिस्टिंग का टाइमलाइन आएगा जियो डिजिटल OTC का, उसका कुछ नहीं आया, पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल का भी कुछ नहीं आया। लेकिन एक लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो सब इंग्रेडिएंट है रिलायंस में यहाँ से भी बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए और मार्केट को आउट परफॉर्म करने के लिए, वो इंग्रेडिएंट है लॉन्ग टर्म को लेकर। उसके लिए हम बाय अपना है अभी रिकमेंडेशन विद द टारगेट ऑफ 3050। नियर टर्म में बोलना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म का जो इंग्रेडिएंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है रिलायंस के लिए। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू, आपने आई थिंक लीडरशिप रोड मैप, साथ ही साथ न्यू जनरेशन के इंटीग्रेशन, उनका समावेश, आपने रिटेल, आपने जियो, आपने डिजिटल, आपने कहीं ना कहीं O2C, सबको लेकर जो घोषणाएं हैं वो सुन ली, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे प्रभावशाली अनाउंसमेंट जो थी वो जियो को लेकर थी। अब आपका आउटलुक सर क्या है, प्राइस आउटलुक आपका? देखिए, हम लोग इसमें बहुत पॉजिटिव है और मैंने आपके साथ पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग इसमें 3200 3250 का इस वक्त का टारगेट मान के चल रहे हैं। जो एक तो सक्सेशन प्लान क्लियरली डिफाइन हो गया,
दूसरे अगर आप रिटेल पे ध्यान दो तो 16,000 के आसपास के इनके ऑलरेडी रिटेल आउटलेट्स है, जहाँ दूसरी कंपनियां 800 स्टोर के साथ काम कर रही हैं। ये ऐसी कंपनी है जो हर तिमाही में 800 स्टोर जोड़ती है। और जिस तरीके से अनाउंसमेंट आई है ना इनके आगे आने वाले दिनों में किराना स्टोर्स को एकोमोडेट करने की, या जियो और व्हाट्सएप के द्वारा वो अपने ज्वाइन करने के बिजनेस को, और इवन एफएमसीजी बिजनेस जिसको इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में ये उससे एक बड़ा रेवेन्यू आएगा और दूसरे किराना स्टोर्स तक डायरेक्टली वो पहुंचने लगेगा, वो मुझे लगता है न केवल इस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि दूसरी जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। इस वजह से मैं शॉर्ट टर्म में ये मध्यम अवधि में ये टारगेट 3200 3250 मान के चलता हूँ, बट आने वाले दिनों में ये टारगेट और भी रिवाइज हो सकते हैं। ओके, अगर आप देखें मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आपका 3250 का टारगेट है। याद रखिएगा ये तमाम अगर आप देखें व्यूज़ प्राइस टारगेट्स राजेश जी के या फिर आपने जो संजीव होरा जी के सुने, ये उनकी निजी राय भी है, उनके हाउस व्यूज़ हैं, लेकिन कोई भी निवेश संबंधी कॉल लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। इस चैनल का CNBC आवाज़ का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम सर और संजीव जी, राजेश जी और शरद जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये थी हमारी डिटेल कवरेज रिलायंस की AGM और उसकी घोषणाओं पर। मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हर्षदा आपसे मिलेंगी मॉर्निंग कॉल में और फिर उसके बाद 8 बजे मैं मुनाफे की तैयारी लेकर होऊंगा हाजिर। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डार्लिंग मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। घर बैठे बैठे 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी बाहर जाओ। ऊपर से कैशबैक भी मिलेगा, मेंबरशिप डिस्काउंट भी मिलेगा, फिर भी बाहर जाओगे। सॉरी कहीं नहीं जाऊंगा। फार्म इजी ऐप पे जा सकते हो। फार्म इजी पे मिलेगी हर ऑर्डर पे बड़ी सेविंग। Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of top quality industrial and domestic products. Manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. अबे मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। बचाया ना, सिस्का BLDC फैंस ने 60% पावर बचाया, पैसे बचाए, प्लैनेट बचाया। BLDC मोटर, मोर सेविंग्स, मोर पावरफुल, मोर इको फ्रेंडली। तुम बचाओ। सिस्का फैंस, लाइट ईयर्स अहेड। Siska. Ad Shop E-Retail Limited, the manufacturers and retailers of organic fertilizer, Ayurvedic medicines and herbal cosmetics, with a pan-India network of 1,200 plus franchises and 1 lakh plus distributors, presents its rights issue on BSE platform with a base price of 10 rupees and a premium of 44 rupees. Total issue price 54 rupees. Rights issue is open from 17th to 30th August. This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. मैडम जी वो सारे पैसे लेके भाग गए और मेरा वड़ा पाव भी ले गए। दिखाते हैं इनको। मोटर वड़ा पाव। डीलर निकाल दे इसके बाद। पंक्चर के बाद भी इससे हवा नहीं निकलेगी क्योंकि ये है JK पंक्चर गार्ड टायर, जो कील लगने के बाद भी होता है हील। JK पंक्चर गार्ड टायर, अब हवा नहीं निकलेगी। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अरे जीनियस, अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF। 550D LRF from Radha TMT, the DNA of a stronger nation. चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता
फायदा नहीं अब। कोई जरूरत नहीं भाई। नई कार खरीदने से पहले एको इंश्योरेंस कंपनी चेक करे और 50,000 तक बचाए। Presenting Vito LED lights. Vito since 1967. बॉस 12 बजे से पहले छोड़ता नहीं है। मकान मालिक 12 बजे के बाद दरवाजा खोलता नहीं है। अब क्या करें, घर पर आया है, पति तो अपना है। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। आस्था ट्रेडर्स का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। अब आस्था पर पाएं ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसके साथ आप सीधे चार्ट से ट्रेड कर सकते हैं और मिलते हैं आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे एडवांस फीचर्स, 50 से ज्यादा इंटेलिजेंट ड्राइंग टूल्स, 80 से ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स, 8 चार्ट्स एक ही स्क्रीन पर। माँ हमेशा कहती है कि चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे श्रीराम का भुजिया बिल्कुल वैसा ही बैलेंस है, एकदम करा।